streets where the truth ain't sweet, where a simp get played and the strong don't reap. Taught to hustle hard, never beg for a seat. While they chase validation, I just grind and eat. Professor on the screen, dropping jewels every night, teaching young kings how to walk in the light. No cap, just facts, we ain't bowing the hype. While they worship the flesh, we resurrecting the fight. I ain't bitter, I'm better, let the beta boy shiver. She left you on red, could deliver the river. Masculine frame like I'm carved out of stone. Ice cube with the truth, yeah, I ride alone. Red pill scriptures, bars from the throne. Masculine warrior, stand on your own. She ain't your queen if I passed unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Professor said it best, unplug, awaken. No love for a heart that's faking or taken. Alpha in the mind, sigma in my soul. This that manosphere rap, reclaiming control. I ain't playing with these games they running. Tears for a queen, nah dog, I ain't done it. She want the bag, the status, a man with the clout. But was ghosting good brothers who were trying to look out. Barking at the lies, bite through the fake. DMX style, I never pump brakes. All that you go girl, turn kings into clowns. But we rising from the dust, taking back our crowns. Respect the grind, don't chase the skirt. You bleed for your fam, you sweat through the hurt. Shout to Brofessor, drop bombs with precision. Teaching lost boys how to make that decision. Red pill scriptures, bars from the throne. Masculine warrior, stand on your own. She ain't your queen if I passed unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Professor said it best, unplug, awaken. No love for a heart that's faking or taken. Alpha in the mind, sigma in my soul. This that manosphere rap, reclaiming control. Dear brother, don't fall, be the man they fear. Truth cuts deep like a blade to the ear. I seen love turn kings into shells while she danced in the club. He was rotting in hell. Mama taught me strength, but the streets talk game. And the lies from her lips, they said hearts aflame. Don't worship the flesh, seek purpose and pain. Let your scars be the ink, let your hustle explain. I see the trap, bruh, the modern woman parade, selling dreams with a filter and designer shades. But truth lives on in the voice of a rebel. And Brofessor, keep it G, turn that dial to 11. Red pill scriptures, bars from the throne. Masculine warrior, stand on your own. She ain't your queen if I passed unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Professor said it best, unplug, awaken. No love for a heart that's faking or taken. Alpha in the mind, sigma in my soul. This that manosphere. हेलो किंग्स, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे सभी को। ऑडियो वीडियो को बता दें दोस्तों, ऑडियो वीडियो आ रही है, साफ आ रही है, कैसी आ रही है? एक बार चैट को देख लेते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल मेंस डे स्पेशल लाइव में। लाइव स्ट्रीम हम जनरली वीकेंड्स पर करते हैं, बट क्योंकि स्पेशल दिन है तो भाई ज़रूर करना था आज लाइव, और इसीलिए आ गए हैं। आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो को एक बार बता दें चैट। सभी भाइयों को हैप्पी मेंस डे। ऑडियो 320 kbps, वीडियो चलो भाई 4K तुम्हें मिल रहा है 720 पिक्सल में, तुम 4K समझ रहे हो तो बढ़िया भाई, बढ़िया, नाइस, ऑल राइट। सबसे पहले दोस्तों आज बता दें, आज की जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हम रिएक्शन भी करेंगे मल्टीपल वीडियोस के ऊपर। थीम जो है आज का हमारा रहने वाला है इंटरनेशनल मेंस डे का जो पूरा इवेंट है। एक एक चीज़ को देखेंगे, क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स आए, सोशल मीडिया पे किसका क्या प्रतिक्रिया रही, रिएक्शन रहा, और इस बात को भी देखेंगे कि हमारे जो गेस्ट्स हैं आज के इस लाइव स्ट्रीम के स्पेशल गेस्ट, मैस्कुलिनिटी रॉक्स भाई, जो हमारे जो लाइव स्ट्रीम है उसमें पहले भी आ चुके हैं कई बार, एंड DKG, जी हाँ, जिनका जो चैनल है देसी काली गोली, जो ब्लैकपिल वाला जो पूरा जॉनर है उसको डेडिकेटेड है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, इनसे भी इनके इनसाइट्स लेंगे रिगार्डिंग मेंस डे।
ओके। इससे पहले हम लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करें, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स ले लेते हैं आप सभी के। सबसे पहले आज किसने जॉइन करा है? जसा भाई ने सबसे पहले जॉइन करा है, तो स्पेशल डोंडा मार्को वाला डीजे भाई के लिए। हरित्रा भाई ने जॉइन कर लिया है, टेक्नोक्रेट। हूर परी हूर परी कौन है भाई ये? विश्वदीप पाल ने ज्वाइन करा है, मिस्टर फिलिप्स ने ज्वाइन करा हुआ है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अभी अभी आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप चैट का पार्ट भी बन सकते हैं। आखिरी पास्ता, यार तुम्हारे नाम तो अलग ही हैं। अश्वनी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, अमोश, प्रीतम भाई ने डोपामीन में डूबा, उज्जवल भाई, प्रीतम, अरहान, सब ने ज्वाइन कर लिया है। कुशाग्र भाई ने भी ज्वाइन करा है। आई कैन सी सम न्यू नेम्स एज वेल। इससे पहले हम लाइव को स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले वार्म वेलकम टू डी के जी। जी हाँ, देसी काली गोली यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आई थिंक इन इन दिस वीडियो, इन दिस लाइव स्ट्रीम, विल बी एड्रेसिंग एज डी के जी। कैसे हैं भाई? अ वेरी थैंक वार्म यू फॉर वेलकम। हैविंग मी हियर यार। काफी अच्छा लगा देख के आपको, काफी अच्छा लगा आपके ऑडियंस को देख के। थैंक यू भाई। पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, जिनको डीकेजी भाई के कंटेंट के बारे में नहीं पता है, इन्होंने मैस्कुलिनिटी रॉक्स भाई के साथ भी कोलैब करा है एंड हिज कंटेंट इज लाइक गोल्ड। मैंने जब पहली वीडियो देखी, आई वाज, मतलब मेरे को तो था कि इतना ज़्यादा डेप्थ में कौन जाके बात करता है, इवन स्पेशली ऑन इंडियन यूट्यूब। क्योंकि जब मेन स्ट्रीम में हम देखते हैं तो मेन स्ट्रीम में इट्स ऑल अबाउट गेटिंग लाइक्स एंड व्यूअरशिप। बट जब मैंने कंटेंट देखा तो उसमें जो डेप्थ है, मतलब अलग इमैकुलेट लेवल की डेप्थ है। एंड आई एम हैप्पी भाई कि आपने शॉर्ट नोटिस पे लाइव स्ट्रीम वाला जो हमारा ये पूरा पार्ट था इसको ज्वाइन करा। इट्स Any माय प्लेजर points टू बी that you हियर। want to share before we start audience members के साथ? व्हाई आरंट यू ये सो एसेंशियली मैं पिछले बहुत टाइम से बहुत बिजी चल रहा हूँ और दैट इज व्हाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट यू नो 1.5 महीने बाद आई एम गोइंग टू बी फ्री एंड देन यू विल गोइंग टू जस्ट सी लाइक अ सी ऑफ फ्लड ऑफ वीडियोस कमिंग इन योर वे। और फिर मैं फिर से 6 महीने के लिए हाइटिस पे चला जाऊंगा। मेरा ये बरसर्क ग्रेट। वाला मामला है। हाँ, जैसे आई थिंक वो हाइबरनेशन में भी होता है ना, पोलर बेयर जैसा, ऐसा आई थिंक, ऐसा ग्रिजली बेयर जैसा कुछ, कि सिक्स एग्जैक्टली। महीने 6 months ऑन 6 months ऑफ। ग्रेट ग्रेट। बट आई थिंक फिर ऑडियंस भी तैयार है, वो 6 महीने की जो कसर रह गई है वो उसको पूरा देखेंगे। एंड आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ द चैनल, तो दोस्तों आप वहाँ पर जाकर भी अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी 2 इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। देयर वाज़ वन वीडियो एचओई-फ्लेशन। आपने महँगाई का नाम तो सुना होगा, इन्फ्लेशन का तो नाम सुना होगा, बट एक नई तरीके की इन्फ्लेशन भी आई है रिलेशनशिप्स के अंदर। गायनोसेंट्रिक समाज से उड़ती-उड़ती, उसके ऊपर भाई ने बहुत ही अच्छी सोशल कमेंट्री और बहुत ही अच्छे से वीडियो बने, तो जाके जाके उसे ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डालूँगा भाई के चैनल का। तो ग्रेट, ग्रेट। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं भाई पहले, उसके बाद आई थिंक हम जो है लाइफ को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। Hmm, विश्वदीप पाल भाई कह रहे हैं आज भयानक ब्लैक पिल फैक्ट्स मिलेगा, एक्सेप्ट बिटर ट्रूथ, एक्सेप्ट रियलिटी एंड गेटिंग नॉलेज ऑफ अननोन इम्परफेक्शंस, इसी में अलग सुख है। डीके जी भाई, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, लाइक चैनल का जो फिलॉसफी होता है, क्योंकि हर एक चैनल का एक डिफरेंट लाइक कंटेंट रहता है, उसका थीम एक अलग रहता है। सो हाउ द ब्लैक पिल और द काली गोली स्टफ इज लाइक, मतलब मैं उसके थीम को समझना चाह रहा हूँ और हमारी ऑडियंस भी, तो आप उसको So थोड़ा सा I मतलब उसमें हमें basically enlighten started out as like a, how do I see this? As a कोई बहुत ही समाज सुधारक, very vanilla kind of guy कि हम्म देश हम्म दुनिया को बदल देंगे, right? हम्म But I interacted with like people for like 6 महीने। मैं काफी एक sort of sheltered उससे निकला। And when I ओके। went to the real world and I interacted with people, obviously वो धीरे धीरे build up हुआ। And like the end जब मेरे पास आया कि I'm essentially a black pillar now and I can't stand these overly positivist people, is जब I was invited to one of my friends college का MUN and just like the stupidity in that room कि 200-300 बच्चे बैठे हुए हैं, सब कॉलेज के बच्चे हैं, they're not like students, so like schools, second third years of एक टॉप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स, वो बस जो कचरा भौंक रहे थे।
And these people genuinely believed in this shit. So I walked out of that MUN midway, and that's when I became, yeah, mujhe, I have to put things to order. No, I have to straighten things out. And that's it. That's the philosophy of the channel. I have a lot of, I would say, empirically backed opinions, empirically backed analysis, और मैं लोगों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ. ग्रेट ग्रेट आई थिंक ये एक डिस्कनेक्ट है और आई थिंक उसको कुछ लोग शीप मेंटालिटी हर्ड मेंटालिटी से भी इक्वेट करते हैं कि जो भी मेन स्ट्रीम में या लाइक आई बेटर लाइक आई एम मोस्टली यूज टू द वर्ड पॉलिटिकली करेक्ट ओपिनियंस ऐसा उसको वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्पेशली क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और कुछ लोगों को भी ऐसा लगता था पहले और अभी भी कि जो टियर 3 वाले जो कॉलेजेस हैं या जहाँ पर बस एकेडमिक्स बस दे दिया जाता है और उसको लोग पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, वहाँ तक ही पॉलिटिकली करेक्ट ओपिनियंस सीमित रहती हैं। बट हाल ही के कुछ अगर आप 3, 4, 5 साल में देखें, तो इवन जो टॉप क्लास आप कह सकते हैं टियर 1 में आने वाले कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जहाँ पे चाहे फाइनेंस के कोई बड़ा कॉलेज है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, मे बी लॉ, मे बी एनीथिंग लाइक इंजीनियरिंग, वहाँ पर भी पॉलिटिकली करेक्टनेस का है। तो मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सेम है या इसमें भी मतलब वेरिएशंस हो सकती हैं एज़ पर योर ओपिनियन? So what you sort of have to understand now, whatever हुँ, you हुँ। have politically correct things, right? These हुँ, are हुँ। all backed by corporate money. कोई हुँ, हुँ। ये naturally नहीं आने वाली conversation में. This is all politically backed with corporate money. When you have these big, big colleges, universities, which have these huge alumni networks, or which have these management connections, even if alumni के बच्चे भी आ रहे हैं, right? हुँ, हुँ, हुँ। That's still corporate money coming in. Even if that's not directly coming in, right? That's corporate money coming into these universities. And when corporate Yeah. money enters any place, it enters that place with certain obligations कि तुम्हें इसको तो satisfy करना ही पड़ेगा. And some of it may be an degeneracy which has been rewrapped as some sort of modernity. That's what's हुँ, entering हुँ, these. हुँ। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली एंड आई थिंक ये जो पूरा एक फंडिंग का भी पार्ट है ना, सो डू यू थिंक कि जो गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और पूरा हम पार्ट देखते हैं, इवन टचिंग द पॉइंट्स ऑफ मिसैंड्री और कैजुअल मिसैंड्री, दैट इज़ आल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस पार्ट, द बिग मनी और जैसे लोग कुछ बोलते हैं जैसे इक्विटी मार्केट्स में कहावत है कि स्मार्ट मनी जहाँ फॉलो करती है, वहीं पे लोग भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। Internationally, हाँ, nationally, nahi, ओके। right? And I'll tell you why. हुँ, India में corporate money has influence, लेकिन उससे भी ज़्यादा influence is the bureaucracy, right? हुँ, हुँ, So let's say you are a UPSC student. Let's say you go down that absolutely terrible road. From the start हुँ, to the end, you're constantly fed these left-wing, pro-quote feminist ideas. It's literally part of your syllabus, right? तुम इसे हुँ, critically हुँ, analyze नहीं कर सकते if you want to get into UPSC. So let's assume generation after generation, bureaucrats बन रहे हैं with these हुँ, ideas deeply embedded in them. ऐसा possible ही नहीं है कि when it comes to administration, वो उन ideas को हुँ, apply हुँ, नहीं करेंगे. That's why you see all these quote welfare policies. हुँ, हुँ, These are all created by, I mean, they are implemented by and created by bureaucrats. हुँ, हुँ, Political parties, I mean, they may use it or misuse it, but ये fundamentally bureaucrats create करते हैं. And a bureaucrat is not creating money. He's just taking money from people who are actually creating money and just spreading it out. With no या like welfare policy, especially these transfers you are seeing, लाडली बहन योजना फलाना ढिमकाना, 50,000 हुँ, लाडली हुँ, बहन हुँ, योजना चल रही है at any point of time, right? इनसे कोई benefit नहीं हो रहा है. These are not like मनरेगा actually gave benefit to the rural India. इससे कोई benefit नहीं हो रहा है. Right? The benefit हुँ, लोग गिनवाते हैं is like लोगों के पास ज्यादा पैसा है. Obviously तुम लोगों को पैसा दोगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा. ये कोई बहुत बड़ा हुँ, हुँ, बेनिफिट हुँ, नहीं है वेलफेयर पॉलिसीज का, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, क्या वो पैसा सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट हो रहा है? एब्सोल्युटली नहीं, राइट? सो आई डोंट थिंक सो. Fundamentally, the bureaucracy has been trained from start to end with far left ideas, and then they apply that idea in the real world, which unfortunately you and me have to suffer. या, या। आई थिंक दिस थिंग इज़ ऑल्सो अ बिट
common in a lot of sermons and lectures given by Mr. Nigracharya. If I hope कि मैं नाम सही से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ. उन्होंने भी कई बार बोला है कि एक सेंस में ना शील्ड की तरह जैसे बोला जाता है कि गालियां सुनने को मिलती हैं या थैंकलेस जॉब है. पॉलिटिशियंस को स्ट्रेट अवे बोल जाता है कि इनकी इन्होंने पॉलिसी नहीं यूज करी या जो भी है. बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्यूरोक्रेसी का भी है. I still remember during these preparation days of mine, एक नैरेटिव है कि और क्योंकि आप हमेशा पढ़ोगे ही वो लेक्चर और वो एकेडमिक्स से भी आता है और आप जब एकेडमिक्स को पढ़ोगे 2-2 3-3 4-4 5-5 साल पूरा वो गाइनोसेंट्रिक राइटर्स और पूरा वही पार्ट है. लाइक इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अदर बुक्स और या लिटरेचर वो भी आपको ज़्यादातर मेंस राइट एक्टिविस्ट्स का जो यूएस साइड में जिन्होंने लिखा है वो ही मिलता था उस टाइम पे. तो खैर तो जब कोई 4-4 5-5 साल से पढ़ेगा उसको और वापस से फिर वो इंटरव्यू देने जाएँगे तो इंटरव्यू इज़ आल्सो लाइक वेरी पॉलिटिकली करेक्ट रहना. यू कैन नॉट से एनीथिंग जो आपको सही लगता है बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एंड मैं ऐसे भी बहुत सारे अपने लोगों ने भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इस तरीके के. आप वहाँ पे जाओगे तो सेकंड ओपिनियन आपकी आप रख नहीं सकते. इवन इफ यू आर समबडी हू नोज़ दिस स्टफ और हू नोज़ कि यार ये तो सही नहीं है, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बट स्टिल उसको मार्केट भी करा जाता है और वाइडली एक्सेप्टेड भी है. डीके जी भाई मैं इसमें ये जानना चाह रहा था लाइक यू हैव लाइक पुट दिस पॉइंट अक्रॉस और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा पॉइंट है कि द नेचर ऑफ दिस gynocentric or gynocentrism to be more precise in India right now. Iska nature it's not directly corporate driven but it is also a bit of the or maybe a majority of the bureaucracy. uh, do you think it is going to change in the coming years, seeing the rise of this capitalistic या फिर खाली वो भी बस हवा हवाई एक बस एक ढांचा ही है जो दूर से नजर आता है. It is going to change, but it's going to get worse. Okay. It is Okay. directly going to get worse. Like, All right. let me just give you the why. First of all, इंडिया में कैपिटलिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. The Okay. corporate money in India will always follow what the bureaucracy think is the safe way to go, right? The reason I think it's going to get worse is now what you are seeing mass entry into the bureaucracy of Gen Z women, who are by far the worst of the stock. So you're going to see them enter into policy making decisions. Going to see them enter into the judiciary. God, they have started an entire campaign to let women into the higher judiciary, and you're going to see them into the corporate policy making arena. And it's absolutely going to get worse. But as Okay. opposed to the US, where it's on your face, right? In India, it's more going to be like they're going to keep multiplying these absolutely useless welfare policies until we have reached a position where the constant subsidification it has led to a huge gender imbalance in favor of women. So it's going to get worse. Okay. ऑल राइट. आई थिंक मैस्कुलिनिटी रॉक्स भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है. मिक भाई कैसे हैं? हम आते हैं डीके जी के पॉइंट पे. कैसे हो भाई? Yeah, I'm good, man. Happy Wednesday, everybody. Sorry I'm a bit late. How are you guys? हमेशा की तरह बढ़िया. डीके जी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया. Hey, nice to meet you again, bro. How are you doing? What happened to him? Hi, लो Shahab. वॉल्यूम. Volume? या Okay. I don't know how to fix that. Give me a sec. इमॉर्टल डेड भाई कह रहे हैं इंटरनेशनल मेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से. सब अपने पैसे का काजू कतली खा लो. सही है भाई, सही है. नाइस. लो वॉल्यूम. मेरी भी लो वॉल्यूम आ रही है क्या? एक बार बता दो चैट. एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं होना चाहिए बस. Okay, how about now? Chat, check now. Check 1, 2, 3, 4. Is it still low? आई थिंक मेरे को तो सही आ रही है. टेक्नो भाई को अभी भी लो वॉल्यूम आ रही है. Okay,
Okay. Okay, they're saying it's okay now. It's all good. All right. Yeah, so we were discussing, Amik bhai, about लाइक गायनोसेंट्रिसिज्म और उसका नेचर। तो डीकेजी भाई ने उसको बोला कि ब्यूरोक्रेसी का भी उसमें काफी लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इज इट लाइक कैपिटलिस्ट वाला एक पूरा ड्रिवन पार्ट है, या फिर यू ऑल्सो थिंक कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भी मेजर चंक है इंडिया में, ये बिल्कुल सेम यूएस जैसा नहीं है? What do you mean by bureaucracy? ब्यूरोक्रेट्स जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास जो एग्जीक्यूट करते हैं जनरली लॉ को, आप कह सकते हो No, डीएम, इस तरीके से। I think, I think they're bought out. Um, ओके। there was a tweet from that lady Arnaz who runs Voice for Men channel. She had connected with an NGO. I think their name is Men Welfare Trust, and she was Alright. talking about the fact how um, is it UPA or UAP? There's a government that has in India, like a large government. Like there's NDA, right? यूपी Yes, है। it used to be UPA. It's India now. Okay. Yeah. So she was talking about a few years ago how men's rights activists approached the UPA, and the ministers in UPA were saying that we cannot really make any laws for false cases against men because we are hearing from women's groups every day. So, like, we hear from you guys, like, this is the first time in years and years I've seen you. But if I don't make the laws in favor of women who are reaching out to us via mails, who are approaching us personally every single day, you know, all these women's lobbies, then I'm going to lose the election. I'm going to try to find that tweet if I can. But I think essentially the problem is just that, right? The enemy, or you want to call it opposition, has like more money, more numbers, and they have basically surrounded the system in such a way that everybody's a prisoner. So yeah, I think it's a monopoly a little bit. So I think executive class is bought out for sure. ऑलराइट। क्योंकि इस पे ना पहले बात भी हुई थी, आई थिंक किसी ना किसी पॉडकास्ट में हमने बात भी करी है इसके रिगार्डिंग कि हाउ द नेचर ऑफ इट इज ऑल्सो चेंजिंग। जैसे पहले क्या होता था, पहले आपको नीचे से बॉटम टू टॉप पे जाना पड़ता था इन द एग्जीक्यूटिव क्लास, बट नाउ स्वैपिंग वाला पूरा पार्ट भी है जहाँ पर आप सीधा हॉरिजॉन्टली भी उसको चेंज करते हैं, वेयर सम प्राइवेट प्लेयर्स जो बड़े ओहदे पर हैं वो सीधा का सीधा जो है सरकारी बड़ी बड़ी नौकरियों में भी अब जा रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल, एंड हो सकता है कि ये जाए। बट मिक भाई, लाइक हाउ डू यू सी द फ्यूचर? मैंने डीकेजी भाई से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? But Professor, before that, so even the corporates, like, what do you think is the root of the problem? Like, I was talking to DKG on a separate call earlier, and जी। I was talking to him about this collective shout, okay, which is a feminist group who was taking down the games on Steam. Everything that they thought was misogynist or anti-women, um, they were lobbying the Steam to take it down. There are a lot of videos on this, like mainstream YouTubers have covered it. Just type collective shout and stuff and you will see it. Now, it's an interesting case study, the way they were operating in the space. Because what they were doing earlier was that they will target like they will make a list of games and they will approach the Steam and they will ask them to take down. But then they figure out over time that it's taking too long to accomplish what we want. So they're like, let's improve the process. Let's bypass Steam and let's go to, the payment providers. So payment providers are a duopoly or a triopoly. If you can control 2 or 3 players, you can control the entire market, which is Visa and MasterCard, right? So if Visa and MasterCard say, hey, Steam, here is a list of games we don't want you to have, and Steam doesn't comply, they could just block the entire platform from receiving payments. And if Steam cannot receive payments, Steam cannot be in business anymore,
right? So like, okay, this is perfect. We'll just go to top-down approach. If we control the top players, we control the entire market. So they went over to Visa and MasterCard, and every time Visa and MasterCard would send a list to the Steam, and Steam would take down the games that Collective Shout asked them to do. So my point is that whether you look at corporates or you look at bureaucrats or the executive class, everybody is, like a puppet, essentially. And the machine works in this way because it's a total monopoly. Like, there are only women's groups. There are only women's groups that can attack you. So you only have to defend against the women's group, which is why anywhere you go, whether it's online space or offline space, it is entirely being controlled and puppeted by them. That's what I think, in my opinion, as far as the observation goes. Now, what's the future? Right, so I think I will let KG comment on that. Yeah. So I think Master gave a very good opinion. And there's actually a name for this sort of people. They're called the professional managerial class. So these guys are not creators. All they do is manage. All they do is manage. They don't do anything else. They don't create. They don't even, they destroy sometimes, but not by intention. So they are not creating anything. They're just managing things already there. For example, you see these streams of what you consider woke things coming out of Hollywood today. So the studios which are making these movies are not controlled by the original creators. They're controlled by a trust which is controlled by the professional managerial class. So whenever a professional managerial class comes to power, which they are right now, they will use those sources of production to advance their ideology. And let's say tomorrow something happens, we control the government. What do we do? Whenever you have an entire class of professional managerials, they are going to use the organs of production, organs of state, or the organs of corporate bureaucracy to their benefit. That's what you said, right? And the professional managerial class is almost in its entirety feminist, or what you consider feminist, right? Even if you go and talk to a right-wing bureaucrat, the social positions he has on the question is no different from a left-wing bureaucrat. The difference between a right-wing bureaucrat and a left-wing bureaucrat is that the right-wing bureaucrat hates Muslims. That's it. There's no other difference between the two. Yeah. डीकेजी भाई मेरे पास एक ना बार बार कमेंट आता है रिगार्डिंग द ट्रैडकॉन पार्ट और लाइक लेफ्ट विंग और राइट विंग and people they write this thing down कि I'm getting blackpilled on this. What is your take on that? क्योंकि मैंने इसको एक बार अपनी वीडियो में भी बताया that ये लेफ्ट विंग या राइट विंग ये है एक ही पंछी, और वो पंछी बस उड़ता है आसमान में एंड वो स्कैवेंजर की तरह दिखता है कि कब जो मेहनत करने वाला जो आदमी एवरेज इंडियन मैन जब वो गिरेगा तो उसका फायदा होगा. वो है दोनों पंख एक ही पंछी के. Gentlemen, जो भी people think about politics, I used to be a huge BJP supporter, like a huge BJP supporter. And when I actually, I started doing the empirical research, the thing I found out, and Arun Chiroi said this a while back, there is zero substantial difference between the two. It doesn't matter who wins, you are screwed either way. All right, so I want you to remember these three things. Nothing ever happens. And right, so like, yeah, go ahead. So go ahead. An individual asked a question, right? Let me just wait a second. How can a tier 3 guy with less exposure compete with some kid coming from executive class and succeed, since executive kid will have more resources and clarity? The answer is you can't. You are going to lose. There is no universe in which you are going to win against him. बट जो कोर्स वाले भैया हैं वो तो बोल रहे हैं कि मेरा 1.5 लाख रुपए का कोर्स लो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. The course wale bhaiya is intelligent enough that he sees that other people in his position are retarded enough to buy their course. Sometimes I think about these things, and I just look at it. Like, sometimes those courses are basically useless, right? You're going to get rich, buy my stock trading course. Abey idiot! It's not about stock trading. It's about having the capital. तू जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके पास कैपिटल है जो कंपाउंड करता है. तेरे पास कैपिटल ही नहीं है. तू चाहे बिल्कुल दुनिया भर की सारी नॉलेज ले ले, अगर तेरे पास कैपिटल ही नहीं है तो तू इन्वेस्ट क्या करेगा?
एग्जैक्टली और तूने अपने 6,000 रुपए और दे दिए उस बेवकूफ को। लोग समझ जाते हैं, आई थिंक चैट में बहुत समझदार लोग हैं वो समझ गए कौन से कोर्स की बात हो रही है। बट या सी द थिंग इज नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, और आप उसे लाइक ले सकते हो, बट कनेक्शंस और वो सारी चीजें वो इससे लाइक इस फेयर से आगे की चीज है। और वो एक ऐसी बात होती योर है कि इट्स नॉट गुड टू लिसन, मतलब वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा मीठा नहीं है। योर नेट वर्थ इज योर नेटवर्क। ये बहुत हम्म मैंने लिंक्डइन एज कमेंट करा है, बट दैट्स द ट्रुथ। हम्म देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड सक्सेसफुल पर्सन। एग्जैक्टली। आई थिंक इसके ऊपर बात भी हुई थी कि केशव बेदी का एक वीडियो था, उस पर मैंने रिएक्ट भी करा था रिगार्डिंग स्किल्स पगलू, कि एक नई मार्केट में यस जमात आई एग्जैक्टली। है, वो स्किल्स पगलू वाले हैं। उनको लगता है कि बस दुनिया में एक ही चीज की जो है दिक्कत है, कमी है, वो है स्किल्स। स्किल्स अगर आ गए तो सब कुछ हो जाएगा। बट दे डोंट रिमेम्बर दिस थिंग कि भाई तुम में स्किल आ गए, तुम जैसे और 1000 भी बैठे हैं, हो सकता है 1 लाख भी बैठे हुए हो, तो वहां पर तुम कहाँ पर जो है नेविगेट करोगे? और उनमें से अगर कोई आगे जिसके पास नेटवर्क भी है, तो तुम्हारा तो गेम ओवर वैसा। सो या it's rigged in a way. Yes. Yes. You know, I'm going to concede something, right? Mm-hmm. Mm-hmm. And it's very it's not embarrassing in a way, because I'm not embarrassed about it. I'm sort of an Mm-hmm. elitist in this way. He the field I am in, right? So the first generation guys, they struggle a lot in this field, right? And I'm Okay. technically, on a very technical term, I'm a first generation guy. But I'm sure I'm not going to struggle चाहे जो हो जाए. That's because in my family there are people in corporate positions जो 2 कॉल में मुझे एक इन हाउस जॉब लगवा सकते हैं, right? Mm-hmm. So here's the Mm-hmm. fact: there are people जो मुझसे बहुत ज्यादा skilled हैं. They know how to draft. They are better at arguing. They are better at like presenting facts. But it doesn't Mm-hmm. matter, right? It कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीजों से भाई, Mm-hmm. right? So it's just these things. You're going to have facts. You're going to have these just soak up information. उस information का कोई फायदा नहीं है. That's why I don't consume a lot of media. I consume select media. Mm-hmm. All right. So, DKG bhai, you said network, like your network is your net worth. Do you think DEI or things of that sort, they are actually becoming a different form of network being provided or opportunity being provided, or maybe like diversity hiring, जो कहीं ना कहीं एक रिग्ड सिचुएशन को क्रिएट करती है फॉर एन एवरेज इंडियन गाय हु वांट्स टू एंटर इन द लाइक ऑफिस स्पेस या जॉब सेक्टर या इस तरीके का? एंड ये सेम क्वेश्चन मेरा मिक भाई से भी रहेगा। No, I don't think it's diversity hiring. Because diversity hiring means कि मैं बाहर से हम्म जाके एक व्यक्ति को ला रहा हूँ, जैसे कि मैं हम्म बोल सकूँ कि मेरे उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, राइट? ओके हम्म यहाँ पे डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं हो रही, बिकॉज ये लोग हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं. तो वो उसी क्लास का हिस्सा है जो फिर से उस एंटर कर रहा है. अगर मेरा बेटा एंटर कर रहा है इस चीज में, तो मैं हम्म डाइवर्सिटी हायर नहीं कर रहा हूँ, वो उसी क्लास का हम्म हिस्सा है. नो आई थिंक मैं क्वेश्चन को एक अलग तरीके से रखता हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा था। डू यू थिंक थिंग्स लाइक एफर्मेटिव एक्शन फॉर लाइक प्रोवाइडिंग जॉब्स टू वुमेन, और वो जो हमें और लाइक टीयर 1 सिटी में टीयर 2 में भी देखने को मिलता है, वो चीज़ को क्या हम सिमिलैरिटी में डाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नेटवर्क वाला थिंग, कि एक नए फॉर्म का नेटवर्क है विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज पीपल विच इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एन एवरेज इंडियन गाय, और इसको जॉब नहीं मिलती, ऐसा कुछ? श्योर, ऑब्वियसली. क्योंकि मैंने अभी एक ट्वीट देखा था, आई थिंक ट्वीट है या ट्विटर पे देखा था, एक पोस्ट डाला हुआ था एक्स पे रिगार्डिंग दिस, करीना कपूर ने डाला था कि नेपोटिज्म आपको पहली फ़िल्म तो दिखा सकता है, बट आपका करियर नहीं बना सकता है। एंड आई एम लाइक डूड, वो एक ही फ़िल्म अगर किसी को मिल जाए, तो कितने तो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड बैठे हैं, अगर किसी को मिल गया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। उस वाले दैट पॉइंट इज को भी कोई लाइक, देखता नहीं है। वो सेंटेंस बहुत ज्यादा रिटार्टेड है, बिकॉज इवन इफ हुँ, यू आर द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, हुँ, अगर तुझे सिनेमा ही नहीं मिल रहा है अपनी मूवी दिखाने के लिए, बिकॉज इट हैज बीन हुँ, हॉक्ड अप बाय एवरीवन एल्स, हुँ, राइट? हुँ, या यू हुँ, कांट एंटर डील्स विद ओटीटीज, हुँ, इट डजंट मैटर. एंड लेट्स से यू आर द वर्स्ट एक्टर इन दिस यूनिवर्स. Let's say कि you are the son of any actor, right? Let's say हुँ, Tiger Shroff.
Tiger Shroff still gets big ads. He still gets interviews. He still gets movies. I don't think हीरो पंक्ति के बाद उसने एक भी वो ड्रॉप करी है प्रॉफिटेबल मूवी, right? He should have been out of the game if this was a free market. The fact that cameras are on him is enough to make him successful. तुम्हें बस कैमरा चाहिए. You don't have to be a good actor. That's why you have all these nepo kids in our face, जो हम 5 साल पहले बोल चुके हैं कि एक्ट नहीं कर सकते. It's because they keep getting deals. Yep. एड्स तो मिलता है. हाँ, और अब ये देखो ना, स्क्रीन अगर किसी को मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो एक अगर मिली है किसी को, तो किसी को नहीं भी मिली, ये भी तो सोचा जाना चाहिए. और जिसको नहीं मिली उसको मिल जाती तो क्या से क्या हो जाता. सो इट इज इन दैट वे स्क्रूड अ बिट, रिग्ड भी है. मिक भाई, इस पे मैं आपका लाइक जानना चाह रहा था, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, लाइक इफ जैसे हमने अभी बात भी करी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I mean, the DEI program is like one-sided. I mean, unless you're going to encourage men to enter in female-dominated jobs, it's like an unequal exchange. It's very one-sided in nature. So it just comes across as women trying to get options while retaining their privileges. So in DEI's context, that would mean we will retain the female-dominated jobs as female-dominated jobs while trying to get more options from male-dominated jobs. So then, obviously, then guys end up getting the worst end of it. But I think it comes back to that point. I think what you were saying about nepotism and the people who are in it will defend it. So people who are benefiting from DEI also defend it by saying that, oh, just getting an opportunity doesn't mean you can keep it without having a talent. But then at the end of the day, it just comes down to, to those who are privileged, equality looks like oppression. And so those who are benefiting from the system, taking away their privileges looks like oppression to them. And I think DEI is just a misrepresentation. Unless diversity is being instilled in all spaces, it is not diversity at all. It's a selective diversity. Yeah, I think those are just a few of my views. Do you guys think, like, I think there was this pay gap study, which was really popular when Peterson was talking about it a lot. And he like, the study basically said that men and women choose their professions. And the more egalitarian the society becomes, the more that gap increases. And I think the essence of that study was that if you look at countries that are doing poor economically, where people are more desperate, women are more likely to enter STEM there in desperation for money, because STEM makes more money. But then if you go to like Scandinavian countries, where like these Norway, Iceland types, where there's more egalitarianism, women are less likely to pick STEM. They're more likely to go towards their traditional jobs. Yes. But there was no emphasis in his narratives about men. Like, what's your take on that? Do you think men would enter female-dominated jobs? Or why don't they do that? Because they being female dominated is enough to put a sort of wall around it कि मैं enter ना कर पाए. So why don't men feel the same way about entering male-dominated jobs? Because fundamentally, males don't see females as competition, right? Because let's say, because I'm talking about this like sort of evolutionary way. Let's say we are out hunting, right, and we see another pack of men. We are going to assume that this person is going to fight us, or he's trying to steal our prey. And let's say we went hunting and we see a bunch of women. We are not going to be worried about them, right? But a woman see a bunch of men, they are worried that this person might steal the berries, or attack my child or whatever, right? No, so when but you see a let group me of women challenge you. dominating us, Let me challenge on that. So the one Right. flaw in your argument is that, let's just say women are trying to avoid men because of the competition.
kind of like sports, right? I think essentially that's what your argument is. Because if you compete with men in sports, you have no chance of winning. So we'll have female exclusive spaces because that's the only way we can win. Fair? Yeah, But the fair enough. flaw in the argument is that when you're applying it to occupation and jobs, why is it that they're choosing? In my opinion, women's job have a unique trait that men's job don't have. Okay, so women occupy all the safe, reliable, stable, predictable jobs. Okay, and men's Yes. jobs are unsafe, unreliable, unpredictable, unstable. So even if women are choosing to be in an exclusive group where they don't want to compete with men, why don't they interchange these groups? Why is it that women don't pick the unsafe, unreliable, unpredictable jobs and men choose safe, reliable, predictable, stable jobs? Why is that? You are assuming that we have free will, right? You're assuming that I'm saying is that there are barriers in place put by women to protect these jobs in the same way that men don't, right? If I'm a miner, I don't care who comes to mine because it's a shit job anyway. But let's say I am a HR consultant sitting in a chilled AC office. I would not want anyone else here because this is a safe, predictable job, right? So there's no free will to change positions. There have been No, artificial barriers. so DKG, so you said, okay, so if you believe there's no free will, who doesn't have free will? Men or women or both? In this case, it's the men who don't really have a free will. Okay, so would you agree with the statement if I said women have more bargaining power than men? Okay, so visualize that when a job market is created, there's a saying, in general, there's a saying, right? Ladies first. Okay. Mhm. So do you think we have DEI is basically ladies first attitude or generally markets attitude? So, hey, here Exactly. are all the jobs, and then women will get the chance to choose first. Okay. Mhm. And they get the first pick. And then whatever is left over is then given to men. Okay. So whoever gets the first chance to choose will choose, the safe, reliable, stable, predictable jobs because they're, you know, in some ways people would argue is easier. And then what's left is, the dirt of the pile, which men have no choice to pick up. Would you agree with that? I think you're making. I think this is a sort of like a different conversation to have. But I think your analogy is sort of simplifying things in a way that they were not simplified to begin with, right? Okay, For so example, let's say if we asked men to take up like a receptionist job or a nursing job or a primary teaching job, given that women were not really occupying them, okay, and I said, hey, you can get it. Do you think men will choose that? yeah, obviously they will. Okay, so I I guess mean, like, I I guess mean, if you're I agreeing don't that, want to deal with in a way that okay. So these are essentially hypotheticals. Like, what if there were no Himalayas between India and China? Would China have invaded India? Probably, but there are Himalayas, aren't there? Would men have chosen these comfortable positions if there were not artificial barriers against them? Probably, but the artificial barriers are there. yeah, but that's my whole point, right? Like, um I am identifying a problem and a solution. So a lot of times people argue that men would themselves not want to choose these professions. But what I'm arguing Mhm. is that if men were given an option to choose, they would choose these. So Obviously, if somebody really has an intention of bringing diversity, then they Mhm. should install reservation system for men and female dominated job and reservation for women and male dominated jobs. Now I think the minute you start doing that, you will get real equality because men will take Mhm. the female dominated jobs and then women will have no option. They will be moved to male dominated jobs unless you be homeless, all right. So essentially. that's a one. I'm going to ask you one simple question. All right. You have a wonderful explanation you have given here. Okay. If you go apply to a company for a position in a place, which department will give you that position or consider your application for that position? For which position? I didn't understand your question. Let's say I want to take a position of a safe, clean job in a company, right?
हाँ, तो मैं अपना एप्लीकेशन डालता हूँ, मेरी एप्लीकेशन इज इन दी ऐसा कोई डिपार्टमेंट जहाँ फीमेल डोमिनेट करती है, वो okay. एप्लीकेशन जाएगी एचआर के पास, और एचआर को कौन डोमिनेट करता है? CEO. नहीं, एचआर डिपार्टमेंट, I'm not talking about the CEO. CEO डे Yeah, टू डे no, थोड़ी HR एक्टिविटीज, reports to the CEO, right? Like, what do you mean? Who dominates the HR? मतलब लेट्स से, so Women every don't- job application goes is through a HR, yeah, yeah. Okay, sure. and HR is female dominated. Yeah. So they're never going to appoint you to a clean position where it is female dominated. No, but I don't agree with that. See, the problem is that um Sorry, wait a the second. decision is not made by the HR. Like I feel like if men were applying, are you like assuming that all the interviewees are women as well? And so like they have They're a in-group either bias. And so if a guy comes to the I'm not system, saying they're he's all only exclusively. interviewing the women. I'm not saying they're exclusively women, right? But they're either majority women, or women form a sort of very powerful lobby inside it, which makes sure that Mhm. more women are appointed to that department. But what if I gave them the reservation quota? Then what happens? First, you Hypothetically. give the reservation quotas, then we talk. Simple as. We like, Okay, so this is like, you didn't really disagree with me because my entire I don't argument was disagree with that, but the yeah, you're point not is, I disagreeing. sort of, I get your point, all right? I get your hypothetical, It's because but I think that's the way it happens for women is that a lot of times companies where let's say you're hiring in engineering, majority of the people are men, and the HR will go, hey, we have a diversity quota, and you have to hire women. Mhm. So what they end up doing is that even though women in the interviews are not really meeting the qualification standard, they still have to fill the roles because of the quota, yes, as long as obviously. they're applying, Fair enough, right? fair So enough. yeah. All right. Yeah, I I think agree with you. Oh, wait, before we move, can somebody answer this question? Okay, DKG. Is there any reason that today is World Toilet Day in अरे same day as ये नहीं हो सकता लाइक दिस यार ये एक ऐसा बात नहीं बताऊं, मुझे ये रुक भी नहीं पता था वर्ल्ड मेंस डे है जब तक प्रोफेसर अनाउंस्ड इट। यार मुझे ये तो कोई आइडिया नहीं था। एंड आई वर्ल्ड वांट टू, टॉयलेट डे भी आज ही है। अच्छी बात है भाई। I mean, toilets are good things, man. At least they don't take up 50% of your income. Anyway, I had हाँ I posted a good meme for that today. I don't know if somebody saw it. Um, कम्युनिटी पोस्ट में ना। yeah, okay, here, हम्म। share my screen for a second. So I guess this is DKG. Men who didn't know it existed. International and this is exactly. I was sad today because yesterday was John Cena's last match on WWE Raw, and then I found out today's International Men's Day apparently. And I found out today when Professor announced it. I had no idea. you मेरे को made तो पता नहीं था देयर इज आल्सो वन डे जिसका जिसका नाम ही है वर्ल्ड सिम्प डे, ऐसा भी है। वर्ल्ड कमाल है सिम्प भाई। डे भी नाम की चीज भी है। तो I want to answer a comment. हम्म। Anti-Gynocentrism Buddha on 10:07 p.m. asked, "My question to Mr. Kali Goli is, aren't we Indians just peasants for the Babu class of this nation? And these Babu kids are abroad with privilege." My answer is कि हम peasants नहीं हैं. We are literally कीचड़ में पड़े हुए सड़ते हुए that's what we are. Because peasants के पास भी कुछ rights होते थे. हम्म। Right? And we have like peasants को तुम displace नहीं कर सकते थे उनके land से. क्योंकि वो रिवोल्ट बैक कर सकते हैं, उनके पास भी कुछ राइट्स हैं। यू हैव लिटरली जीरो राइट्स अगेंस्ट अ बाबू, सो यू आर वर्स देन पेजेंट। एंड आई थिंक ये तो एक कोविड के समय पे एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी वेयर देयर वाज दिस डॉक्टर, उसको डांटा जा रहा था बाय सम लाइक ब्यूरोक्रेट बहुत बुरी तरीके से, और जब वो सुनता है वो आई जब नो वो आई बोलता नो है कि पीपल आई एम आई नो एजुकेटेड वो पीपल वाला। हु हैव हम्म। हैड लाइक तेईस से एक लाइक आई न्यू अ केस वेयर देयर वाज अ 40-year-old industrialist in the तहसील, वेरी वेल नोन पर्सन, 40 साल he was doing business here,
एंड 24 साल का एसडीएम आता है और वो बेसिकली ही शट्स डाउन हिज फैक्ट्रीज. एक 24 साल का एसडीएम. Yeah, so you basically this guy is like a proper industrialist. He's not even like a not like a just like a सड़क चलता इंसान. So you're basically एक सड़ता हुआ कीड़ा in front of them. You're not even a peasant. And maybe that could be the reason people worship these government jobs so much. मतलब मैं People तो worship वर्शिप को भी government jobs छोटा ही over शब्द there समझूंगा. because they want to do corruption. That's it. और कोई reason नहीं है. Okay, Professor. Yeah. Insult नहीं Yeah, करना है I मेरे think birthday पे. we'll start the agenda. Just let me flash this tweet. So this is what I Yeah. was talking about. It says when men's rights activists approach UPA2, they were told how women's rights NGOs visit them almost daily, and thus they have to listen to them. Men's rights NGOs are run by men without funds. Will you make laws because one side meets you daily? Yes, So obviously. yeah, so I think it's a funding and numbers issue, to be honest. लोगों ने तो कमेंट की What's पूरी the लाइन लगा agenda? दी है. या ओके. सबसे पहले फिर से एक बार हैप्पी मेंस डे टू एवरीवन. सबसे इम्पोर्टेंट यही है डिस्कशन में आज पार्ट, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस शेपिंग मॉडर्न मैस्कुलिन एक्सपेक्टेशंस की कैसे मैं तो इसको बोलता हूँ कि कंधे तोड़ने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखा है बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस में. सबसे पहले ये मैं दोनों से ही जानना चाहूँगा इसके ऊपर ओपिनियन. मैं एक बार आर्टिकल को दिखा देता हूँ विच इज़ दिस आर्टिकल. I think earlier we were also discussing this, Meg bhai, that there is a series of these posts or news articles regarding male loneliness crisis or mental health. और जब भी मेंस इस तरीके का कोई डे आता है, फादर्स डे आता है, सो उस टाइम पर भी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन या एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करने के, वो उठाकर सारा ठिकाना दूसरों पर ही डाल देते हैं. इट्स लाइक मैस्कुलिनिटी को डिमोनाइज करके दुश्मन बना देना कि यही तुम्हारी बीमारी का असली जड़ है, ऐसा. सो मैं इस पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले कहाँ पर गया, जस्ट अ सेकंड. या इस पे मैं जानना चाह रहा था आप दोनों की ओपिनियन कि स्पेशली दीज इनविजिबल चेन्स, क्योंकि अभी एक रिसेंट में बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था एक आर्टिकल, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस का था वो, वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट द मेंस मेंटल हेल्थ, ऐसा. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये डायग्नोसिस तो करते हैं कि इनको दिक्कत है एक्सवाईजी एक्सवाईजी एक्सवाईजी, डिप्लॉय भी करने की बात करते हैं कि जी इनके लिए थेरेपी होनी चाहिए, वो किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला लेंगे. वे साइकोलॉजिस्ट तो बेचारे ऐसी टर्म बन चुकी है कि जो पढ़ भी रहे हैं साइकोलॉजी वो भी डरते हैं कि बोलने से कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ. पिछले 2-3 हफ्तों में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं. और उसके बाद देन दे डीमोनाइज़ मैस्कुलिनिटी आल्सो कि ये इनकी गलती यही है कि ये आदमी है. तो लाइक दे वांट टू ट्रीट गाइज़ एज़ सम सॉर्ट ऑफ, जैसे इसके बारे में जो वेस्ट में भी बात करी जाती है कि दे वांट टू ट्रीट देम एज़ डॉटर्स, जबकि वो डॉटर्स नहीं, वो सन्स हैं. तो उनका जो एक तरीका है दुःख को दिखाने का या एक्सप्रेस करने का वो डिफरेंट होगा. बट उसको एक डब्बे में डालना चाहते हैं. उसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इफ यू आर नॉट क्राइंग और आप वैसे एक्सप्रेस नहीं करते तो यू आर नॉट दैट मच ऑफ अ पर्सन, ऐसा. सो I just want to ask your opinion and your take on this, both of you. Well, first of all, talking about the psychology stuff recently, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय प्राउड आर-वर्ड सेना फाइनली कू कर लेती है और हम सबको गैस चेंबर्स में डाल देती है, I will be really looking forward to meeting you two in public in the IRL during the incelocide which will take place. Nevertheless, I think people who write about the male loneliness crisis don't actually know how bad the male loneliness crisis is, right? So in a way, if you're not a young Gen Z lonely man, no one will know how bad your loneliness is, but you, right? You talk to a boomer about this, the boomer will just say कि अरे बाहर जाओ, पार्क में जाओ, योगा करो, फोन छोड़ दो अपना. अरे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, because he has no idea how bad things are.
Sunny Kumar, if you hide your face, talking is. सी भाई सनी भाई सुनो, तुम्हारा मैंने कमेंट देख लिया है। अगर तुम्हें सुनना है तो तुम सुन सकते हो, ठीक है। द थिंग इज, ये जो पॉइंट बोल रहे तुम उस पे नहीं सुन रहे, तुम्हें शक्ल देखनी, मुखड़ा देखना है। अब मुखड़ा देख के तुम क्या करोगे भाई? ये तुम्हें आधा आधा मुखड़ा तुम्हें दिख नहीं रहा, बताओ। I mean, that's ironic coming from a chatter who doesn't even have a profile picture. यस। Come on, Sunny. Show your face first. आयरनी पे आयरनी हो रही है, मतलब ये नाइट के टाइम में सनी से नहीं हो रहा है। Sunny, if you wanna argue with us, maybe not on. I don't know if Professor is up for it. You know, you can bring your face to my channel. Okay, I'll give you a spot if you're interested. मतलब जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो नहीं सुनना। मुखड़ा दिखाओ यार, मुखड़ा, शक्ल, अरे यार डिम्पल्स दिखाओ। क्या भाई? हाँ भाई, बात तो ठीक है यार। हाँ भाई, नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा ना, तो मेरा बहुत गैंग बुरा नहीं चेहरा कर रहे है, भाई। सॉरी। सुनो सन्नी भाई, गैंग कर रहे होते ना तो मैं अभी ब्लॉक ही हो जाते तुम। गैंग नहीं करते भाई, वो वाले मत समझो, हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। हम साइकोलॉजिस्ट Dude, वाले I नहीं want to say this to you, right? Everyone in the chat, never go to a female psychiatrist. Okay, सनी so पाजी आगे लग रहा है। कोई नहीं, या कंटिन्यू। Guys, I don't know how to put give me 2 profile. seconds. I'll just be back. Okay, let's get back to the topic. Okay, so let me challenge you guys. Okay, wait, is DKG AFK? I had a question for him, Mr. Kali Goli. Professor, do you think loneliness epidemic is a thing, and how bad is it? थिंग तो है, या फॉर श्योर, यस। आई टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस इट इज। मुझे लगता है ऐसा मार्केट जो करा जाता है ना कि हाउ बैड इट इज, वो अगर आप उसकी मार्केटिंग पे भी देखोगे तो ओनस आदमी के ऊपर ही डाला जा रहा है कि ये इनमें ही कुछ ऐब है या इनमें ही गलती है, True. और वो उसको इतना बढ़ाकर दिखाते हैं, वो गलत है। दैट इज अ थिंग। Okay, so there was an article in the Indian Express a couple of years ago. Okay, it said 2/3 of men are lonely. Do you guys agree with that? Do you think that's a correct statistic? Chat, let me know. Do you guys agree with that? 2/3 of men are lonely? I will pass no judgment on it until I can see what the methodology of the resource paper was. या मी टू। But I'm अगर going ये to 200 assume, बच्चों को पकड़ के करा दिया फिर क्या करोगे? ये 200 बच्चों को लिया, उसमें से 150 निकल गए, जी हम तो लोनली हैं। हाँ तो चलो भाई बे, सारे के सारे सब करोड़ lonely है भाई. सब Everyone is लोनली lonely. गए। A lot of like Okay. social science research in India is just garbage, by the way. It's just pure garbage. You look at the methodology and this is like, how the fuck is this getting published? अरे वो समोसे वाला, मैं तो समोसा गैंग बोलता हूँ उसको। वो जो पेपर को साइन भी करते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी वंस जो सीनियर वंस होते हैं, वह करेंगे उनके सामने समोसा रख दो, चटनी रख दो, तो वो पास कर देते हैं वो पेपर पढ़ के। क्योंकि जिसने वो पेपर भी लिखा है ना, वो भी उसने लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करी होती है, पुराने पेपर देख के। वो I mean, एक्सटेंसिव that's लेवल not तो an छोड़ो, issue, right? लाइक But नीचे से कुछ है फिर ही वो नहीं वैसे। research नहीं है. That's just secondary हाँ, commentary. हाँ। वो बच्चों वाला हिसाब हो गया, जैसे वो पता नहीं. स्कूल प्रोजेक्ट ही है। Yes. I mean, but I'm going to assume. I mean, the Indian Express is still somewhat one of the very few, like, somewhat decent print media which exists in India today. Even if it's ओके। pretty left wing, like वो खुद Okay, को right okay, wing so कहता है, but like it's fairly left wing. so let me challenge it. I don't know what chat is saying. What is the chat saying? Okay, they didn't really say. Nope, most live in solitude. No, I disagree. What men need is a good food hobby. I was lonely even when married. No comments. A C++ says yes more than 2 out of 3. So a C++ agrees. Okay, I disagree. I think it's a fake study, and let me tell you why. Okay, I'm gonna share my screen.
Wait a moment. Okay, let's take a look at it. Wait, hold on, guys. One sec. Okay, so this is the article, right? It says Indian men are facing loneliness epidemic. We're not talking about it enough. So I looked at who did the study here. There is an organization called Yuva. They have surveyed 900 people in 20 plus cities in India and found that 2/3 of them are lonely. Does anybody want to take a guess who is the founder of Yuva? I think it says right here. Nikhil Taneja, chief and co-founder of Yuva and famous for his Be a Man Yar podcast, explained that this finding has been consistent with what they have heard at the Yuva roadshows. This is Nikhil Taneja for anybody who doesn't know what this guy does. Nikhil Taneja is a feminist who was on the board of NGOs and women's organizations like Girl Rising. And then he became the part of the program where feminist strategy was that men, like these manosphere voices, are basically Mhm. taking control of the male audience. So we need to detach them from there and create imposters to attract male audience and make them feminist. So Nikhil Taneja is the of shows like this. Okay, he says, I created a show called The Man's World, which is about a raging misogynist who learns about gender inequality when the world flips and men are suddenly at the bottom. If you go to his show called Be a Man Yar, he spends the Mhm. entire lecturing men about how to make world a better place for women. Mhm. Okay, so here it is. Sorry, I'm moving between the tabs. One last brief on Nikhil Taneja is this men's rights article that was published earlier this year, अच्छा, which ये was लिखता भी है ये बंदा? yes. हम्म। He has, यार he, ha- he has निखिल तनेजा access का to. खोल के देखा. Wait, we'll go to his Sorry, study. I sorry. just want to say one thing. So he's an industry plant. He has access to all the A-list celebrities. He brings them on his show and starts lecturing men about how to make world a better place for women. Then he calls himself as a meninist and he infiltrates all the men's spaces by thoughts like these. Like this is an article after Atul Sabaj, okay, and it said bra burning to boxers on fire. Meninism is mainstream now. This headline was published by Times of India after, men's rights activists went mainstream after Atul Sabaj. There is a column here, which again Nikhil Taneja somehow managed to infiltrate. And look at the quote. It says, when boys are isolated, it makes them angry. Either they harm themselves or the world, especially women. So do you see how he's changing the subject again? हाँ, बहुत ही This guy, चालाकी से। हम्म। men cannot be in the spotlight. Every time they are, he needs to shift that to women. All right. So this is the organization that did that Gen Z study. Okay. So now I wanted to see what's in the research paper. Okay. Because he clearly, the industry plant who gets A-list celebrities also got a feature in the Indian Express, which is not a surprise to me. But what's in the study? So I went to his website, and the study is called Not All Gen Z. But when you download the PDF, it doesn't have any study at all. It is just random bullet points on the website. मैन सही में। आई थिंक ही इज ऑल्सो द सेम गाय ना जिसने पॉडकास्ट में एक वो जो है फीमेल क्रिएटर है जो
अभी साइकोलॉजिस्ट से पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, उसको सब अपना मदर मदर बोलते हैं और राइट बहुत यार, ही सॉरी एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हम्म, सहेल पांडे ने कमेंट करा 10:37 PM पे। थैंक यू मेंशन अतुल टुडे, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम। इमोजी इमोजी, प्रे इमोजी। तो अतुल श्रीवास्तव का क्या हुआ है ना, उसकी बीवी को वापस अपनी नौकरी मिल गई है, उसके दोनों बच्चे उसकी बीवी के पास है, और जिस जज ने पैसे खाए थे उसको अब वो मिल चुका है, प्रमोशन। अब वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की जज है। क्या मेक ऑफ दैट एज यू वुड नो। There is a protest organized on the anniversary, I think on December 9th. Um, for people who are in Bangalore, they can come to Freedom Park. There's a huge protest. बाय द वे Uh, चैट कहाँ से हो बता देना चैट में भी। yeah, where are you guys from, Chad? Let us know. Okay, so this is the study when I click the link. Please tell me in this 2-page, not even 2 pages, a single page document, where is the study? All I see is items available, hero videos, reels, static posts, content creator intervention, open heart mics, workshop, town hall. None of this is clickable. Research, quantitative research, manifesto, 72-hour. Where end of the paper? Where is the study? Where is it? This is the best. This is the best newspaper in the country, by the way. By the way, I was reading. I went to Nikhil Taneja's LinkedIn page, right? And I'm going to quote from his about section. Please Nikhil do. Taneja is a Mumbai-based entrepreneur, writer, producer, storyteller, teacher, public speaker, and mental health advocate. जिस सेकंड किसी की बायो में पब्लिक स्पीकर आ जाए ना, उसे उसी समय कचरे में फेंक दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें कुछ भी अच्छा ओपिनियन नहीं देने वाला, वो बस बकवास करेगा। ये ना एक नई मतलब एक नई तरीके का ही है, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप कोच, रिलेशनशिप मास्टर, क्योंकि कोई भी ओपन सोर्स है ना एक तरीके से नॉलेज, तो कोई भी अपना टैग लगा सकता है एंड इसके पास तो नंबर्स भी हैं। ये इस तरीके जो क्रिएटर्स है ना उसके ऊपर सीधा आई थिंक कॉल आउट करा है अभी एक रीसेंट वीडियो में। मैं एक वीडियो देख रहा था किरण रॉय भाई की, उन्होंने एक वीडियो डाली थी एंड दिस इज वेरी मच रियल गाइस, जो भी सुन रहे हैं इसको। अ, एक होता है कि डिस्कार्ड कर देना या स्ट्रेट अवे जो कैजुअल मिसएंट्री देखी जाती है कि वेयर द डिस्कार्ड मींस इश्यूज, एंड देन देयर आर दीस काइंड ऑफ पीपल आल्सो जो बुलाते हैं वो पाइड पाइपर की तरह, और उसके My बाद एक IIM अलग Bangalore वर्जन professor से calls himself speaker. Should I stop listening to him? अरे मेरे भाई, वो IIM का प्रोफेसर है, वो इसलिए खुद को स्पीकर बुलाता है, लेकिन उसकी वो अपने लिंक्डइन पे IIM प्रोफेसर डालेगा, स्पीकर नहीं डालेगा। उसकी पूरी पर्सनालिटी ये है कि वो पब्लिक स्पीकर है, एज इफ पब्लिक स्पीकिंग कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में। जस्ट कंप्लीट पेडांटिक retard, some of the guys. एंड ही इज नॉट द वन, आई थिंक मिक भाई इस पे हमने पहले भी बात करी थी, दीज काइंड ऑफ क्रिएटर्स एक नहीं है खाली, एक और भी आया है जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी करी थी। उसका भी सेम ही यही नैरेटिव था कि मेल ऑडियंस को गैदर Raghu. करते हैं, उनकी बातों के बारे में Yeah, बात करेंगे, हाँ, एंड देन विल जस्ट स्लैम द शिट आउट ऑफ देम कि तुम में गलती है, तुम्हारे बस की नहीं है। और ये बहुत ही सिमिलर है कि वो डायग्नोसिस भी सही नहीं करते बट करने का दिखाते हैं, डिप्लॉय करेंगे, डिमोनाइज़ करेंगे, और जब इतनी सारी चीज़ें होंगी ना तो आर्गुमेंट तो छोड़ो, डिस्कोर्स तो छोड़ो, सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, और वो एक तरीके से पूरे उस कन्वर्सेशन की ही डेथ है, जो एक इनविजिबल चेन में आप कह सकते हैं। true, अ, but I don't जी। want to dismiss this topic with just shooting down a messenger. हुँ, Let's हुँ, just हुँ, take a look. So his study doesn't exist. I feel like Indian Express didn't even verify anything. They published a random number. So Right, I and actually asked, I asked Grok to find out if what are the reputable studies. So he listed 3. One is this State of American Men survey, which is by Equimundo, which is also हुँ, a feminist organization. Second one, where did it go? There was a Gallup poll. Okay, Gallup World Poll. This is the one that I believe because Gallup does not have any political agenda. It's a non-biased organization. हुँ, 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 हुँ। Okay, and then एक बार third थोड़ा one ज़ूम is कर सकते हैं? ज़ूम कर yeah. दीजिए प्लीज़।
Third one is yuva. So if I discard the feminist organizations and we look at Gallup poll, now this is not a small study. It says they surveyed 140,000 adults from 142 countries. Majority of them were from US, but they did add people from other countries as well. Now look at the gap between this study and feminist studies. It says that there are 21% of men who experience daily loneliness, and there are 17% women that experience daily loneliness. So that's a gap of 4%. Then it says under the age of 30, 27% men versus 21% women, 6%. So we're talking about 4 to 6% of the gap. Now, when you look at the Indian Express article, which was published 2 days ago, Professor, or yesterday actually, which says the main crisis that men have is mental health issues because they're lonely and they don't have any spaces to talk about their issues, I believe it is performative because you're talking about 4 to 6% of the men, right? Yet every time you talk about women's issues, it's always about violence. Every time you talk about men's issues, it's only about mental health. And that in the Yes, same yes. in the same article, they go on to say this is the reason why men delete themselves. Now, the gap between men deleting themselves versus women is 3 times, 300%. Okay. So somebody please explain to me, guys, who has the answer on this? How does 4 to 6% of the loneliness gap account for 300% gap in the suicide, or 200% at least? Who will explain that? Hmm. Well, I think because when you are a woman, you get natural sympathy, right? If Mhm. you see some, let's say, poor old female just sitting on sitting on the road, you naturally feel sympathetic towards them because from an evolutionary point of view, it reminds you of the females in your family, right? This is not the same as men, right? So a man on the man on a bad luck or man in like a, let's say, bad situation does not trigger immediate sympathy in the same way a female does. And so when there is a lack of support group, there are more suicides. Right, एग्जैक्टली but एंड आई थिंक इसमें ना एक जो चीज़ देखने वाली है वो ये भी है कि ये खाली उस इशू को जैसे मिक भाई ने भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है कि खाली वो मेंटल हेल्थ वाली इस पॉइंट को कि ये इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अबे ये तो देख लो वो एक्सप्रेस करना तो छोड़ो उसका तो गेम पीछे कितने और 10 रीज़न उससे बजा हुआ है। उसको वो कभी भी एड्रेस नहीं करते बिकॉज़ अगर वो उसको एड्रेस कर देंगे ना तो स्ट्रेट अवे दे विल गेट कैंसल्ड और वो कैंसलेशन के डर से तो उसको ऊपर के लेवल पर ही डाल के मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब मतलब सुनने में अच्छा लगे बस खत्म। और ये भी बातें नहीं होती, ये भी बात जो करी जा रही है ना वो इसलिए हो रही है कि दे अगेन वांट टू ब्लेम मेन ओनली। मैं इसके ऊपर एक पॉइंट भी ऐड करा है अभी आगे वाले जो एजेंडा है हमारा उसमें रिलेटेड टू दिस थिंग। ये तो बहुत आगे आ गए हम। ये रहा, कहीं पे तो था आई थिंक ये रहा व्हाई मैस्कुलिनिटी एंड सोसाइटी बिकम्स द स्केपगोट ऑफ फॉर मेंस प्रॉब्लम। वो या तो मैस्कुलिनिटी को मेन प्रॉब्लम दिखा देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर कोई और उनको खड़ा करना होगा रीज़न या बताना होगा तो वो सोसाइटी पे डाल देते हैं कि ये सोसाइटी की ये वजह से नोरा, आदमियों को ये झेला जा fair रहा है। enough. Well, also let me just point another thing out, right? हुँ, हुँ। When you have these, I want you to think about something. When you have these billionaire funded academics constantly saying कि ये अपनी ओपिनियन शेयर नहीं करते, ओपिनियन शेयर नहीं करते, ओपिनियन शेयर नहीं करते, what they real अब तुम्हारे इमोशन शेयर नहीं करते हैं, they are saying this because your emotions have commercial value, right? They can be commercialized. उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रहे हो। दे नो योर इमोशंस कैन बी कमर्शियलाइज्ड, दैट्स व्हाई वो तुमसे वो निकलवाना चाहते हैं। Fatality. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुखी हो मेरे भाई, बट बिकॉज दे नो नाउ कि तुम दुखी हो, राइट, बिकॉज ऑफ वट एवर सर्वे रिसर्च, नाउ दे कैन शो एड्स ऑफ अल्कोहल, ऑफ सिगरेट्स, ऑफ थिंग्स विच लोअर व्हाट यू कैन से दुख के लेवल्स,
Your emotions are only being seeked out so they can be commercialized. They don't give a fuck about you. पुड़िया पकड़ाएंगे कंज्यूमरिज्म वाली, वो भी काले रंग की वैसा। Also, have you guys heard of this idea of Parkinson's law of triviality? It's also called bike shedding. नहीं, आई थिंक मेरे को भाई बता सकते हैं इसके ऊपर, ये अच्छी चीज है। Okay, so Parkinson's law of triviality basically talks about how you can distract somebody from discussing the main issue by flooding the space with trivial things, as if like, let's spend 45 minutes on talking about the paint of the bike rather than, and only 5 minutes on talking about the quality of the bike, whether it runs or not runs. Okay, so a good case study for that is big tobacco. So when big tobacco came with the cigarettes, some scientists pointed out that it's going to cause lung cancer. So these big tobacco guys, meet in New York, executives, 4 or 5 executives, and they come up with an organization, Tobacco Institute Research Foundation, something like that. And they're like, let's use the law of triviality, which is that we will install a scientific organization and publish thousands of peer-reviewed studies मैं to distract the people with trivial things. So we can delay them from looking at the actual causes of the cancer, which is a cigarette. So they would come up with things like, um, pollution from cars causes cancer. They would say things like stress causes cancer and cigarettes relieve the stress. So our product is helping you reduce पियो cancer rather than giving छल्ले you बना cancer. हुआ। It's like genetic, if you're genetically doomed, that causes cancer. And so whether you're a smoker or not, if you're genetically doomed, you will get cancer. They went as far as saying that if you have pet birds, they have aviation protein in their feathers. And so that causes the cancer as well. And then they ended up saying that being able to smoke a cigarette is about choices. So, are you really going to have a nanny state that dictates to you what you can or cannot do? Or are you going to be your own boss and decide what you want to do? Right. And so they even put out an ad with a feminist narrative, which is that, hey, women empowerment, women can choose whether to smoke or not. Don't let anybody tell you what to do with your life. Right. So the whole idea was, talk about these, talk about air pollution, stress, anxiety, pets, I don't know, a bunch of normal things like birth pill, talk about occupational exposures, and distract them long enough. Maybe you distract them for 20, 30 years. And it's and by the time they find out the real science, right? Hey, all of these are insignificant in comparison to direct cancer that smoking can cause. By that time, entire population is addicted. And even if you now want to stop tobacco, you can't. People are addicted to it. So I think they do the same thing when they talk about, men's issues. They try to. There is a hint of truth when you say that men are told not to share their problems, not to cry, but they exaggerate it and they make that trivial issue. They take it out of context and they flood the entire media space with this. So there is no time or space left to discuss about the real issues that actually cause the self-deletes or the real issues that actually put men in a position where they're in pain. So instead of talking about why men should cry, why don't you talk about not putting men in a position where they need to cry in the first place? Why don't you talk about, telling people to create spaces for men, right? Or listening to their problem rather than asking men to talk, or talking about issues like these alimony cases, rape cases, reservation system, right? But they don't want to leave any time for that because that's what hurts them. So I think that's my take on it, and I think for all these irony with the Indian Express is, let me share my screen and show you something.
Give me a sec. Okay, so this is the article they published yesterday. This is their Men's Day article. Men and boys are not all right. India can't ignore it. Keep that ignoring was a these very crises. good, like, So this whole article, they talk about how men suppress their feelings, essentially. Okay. And irony is that when Indian Express had published the loneliness epidemic article last year, look at the comments. Can you see them on my screen? Yeah, It says Indian men are facing a loneliness epidemic and we are not talking about it enough. Comments. Deserved. deserved. बताओ यार. Only an epidemic when men face it. Women have been lonely in their own families, blah, 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 blah. The son holds a special no, significance in the eyes of his mother. Why can't the lonely Indian men comfort each other? Maybe start paying a dowry. So what is the Feels point? like मतलब यहाँ पर डालने की क्या जरूरत है उसको? वो तो अलग ही चीज है. So my And point is that what is even the point of saying that men suppress their feelings when you have overwhelming evidence of the fact that society suppresses men's feelings? So when you're writing these articles, instead of telling men to speak up, why don't you ask the society to start listening first? How did we get to this problem in the first place? Of men not being able to talk is because society lots didn't want of to listen. एंड सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? ये बढ़िया चीज भी इसमें क्या देख सकते हैं, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग जैसे बोला जाता है. यहाँ पे ये है कि जो ऊपर बोला है ना इन्होंने कि ये जी एक्सप्रेस नहीं करते, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नीचे कमेंट्स में ही दिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं करते. मतलब आर्टिकल I, देख के जब इतने सारा ऐसा आ रहा है तो किसी ने कर दिया तो उसका तो गेम ही ओवर वैसा. Man. I'm going to give an advice. I mean, from my short line, you guys are older, obviously. When talking about emotions to a woman, and it doesn't matter who that woman is, everything you say will be used against you. Bleeding next to a shark, as they say. Everything That's you say that will be used, can, and will be used against you. Full stop. Mm. Mhm. I that think the is male loneliness crisis is only there because you are not getting quality marriages these days, and that's more or less it. Because at some point in a man's life, the only quality companionship he gets is from his partner. I would disagree with that. I mean, I'm not going to say that. Of course, you can have great friends. I'm not saying that you तुम्हारे बड़े जिगरी दोस्त हैं. But at some point, the only quality companionship you get is from a partner. Bro, I think that's the worst type of companionship there is. Like it is I mean, conditional मैं love. समझ गया. I'm not मैं like समझ गया. लाइक मैं दोनों के पॉइंट समझ गया. मैं बताता हूँ कैसे. आई थिंक मैस्कुलिनिटी रॉक्स भाई इज टेकिंग इट फ्रॉम द रियल साइड कि अब नहीं हो रहा ऐसा. मैं समझ गया वो. एंड When डीके was जी it happening? या No, no, एंड डीके no. जी Okay, so मैं एक wait, बार wait, no, let बोलता me हूँ. ask you a question. हम्म, Was it working before? Like so look at his argument. Mr. Kali हम्म, Goli says हम्म. that the best type of companionship a man can get is from his partner. So, at what time was that companionship the best companionship? Like when traditional marriages existed, was it there then? No, I think थोड़ा सा अलग है. I think what he's trying to say is कि let's just say there is a guy in his 40s or I'm going 30s. to I'm going to उस concede टाइम पे something अगर here. जाके किसके पास अवेलेबिलिटी है, he's talking about the probability side of thing, not the reality. वो Yes, but थोड़ा सा I है. don't have enough quantitative data to sort of corner masculinity rocks on this one. I'm going to concede defeat in पीयर that स्टडी रिव्यू position. चाहिए हमें. No, 250 लोगों की. I'm not in peer study, dude. I don't have You don't, कोई surveys ही no, नहीं है ना guys, जो तू guys, compare कर सको. you don't need the study. You just need logic. Okay. So if you think women and men, like the partner itself, is the best companion, why is it that the only way the two of them can stay together is when they're being forced to live together? So when the marriages were working, they were working because divorces were not allowed. The minute you start allowing the divorces, they are now not working.
So what conclusion does that lead to? Is that there was never a companionship. They were both trying to escape each other. It's just that, is the escape route open or not? On the other hand, if you were to take a look at non-conditional relationships, or maybe something that you're related to by blood, right? Some people have good relationship with their parents, others don't. Okay, but those who have good relationship can say that, yeah, you do get unconditional love from that sometimes. You get companionship from a dog. Okay, that's the best companionship you will have. Loyal forever, will love you without any condition. You can get companionship from your brotherhood. Not every guy will be a great friend, but when you do find great friends, they will stay with you forever and they don't expect anything back from you. So when I compare all of this to maybe a partner, is that available there? Because otherwise, because you've seen the studies, I've seen the studies. Why are women choosing you based on your money if it's about companionship? Yeah. And why are they Fair leaving enough. you when you don't have the money? Fair enough, I guess. Right. I guess that's a good point. That's a good point, nevertheless. But at some I point, think see मैं समझ गया like what your मतलब दोनों का approach जा उसी डायरेक्शन में रहा है, but Mick Bhai is approaching it from कि क्या हो रहा है reality, and DKG was asking it from a probability side of things. Yeah, so I think we can move on. इसी के ऊपर एक चर्चा करते हैं. ये एक वीडियो है. Let me share my screen. ये बहुत ही बड़ा एक यूट्यूबर है जो कि चर्चा में भी रहा. एक कॉमेडी वाले शो में इसने एंट्री भी ली थी, जिसके बाद एग्जिट लेना बहुत भारी हो गया बेचारे के लिए, बट कोई नहीं. अब यहाँ पर देखते हैं, ही हैज़ लाइक मैसिव फॉलोइंग. ये क्या बोल रहा है रिगार्डिंग मेंस डे. बाकी बाय द वे ये पिछले साल का लग रहा है मेरे को तो, शायद से, या उससे भी पिछले साल का, हू नोज. 2022 का ही है. हाँ, कितने साल हो गए? 3 साल पुराना. पता कि 75% ऑफ ऑल सुसाइड्स आर कमिटेड बाय मेन. कितने सारे मर्द खुद की जान ले रहे हैं टेंशन की वजह से, मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से. और इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की बेसिस है सोसाइटी. सोसाइटी ने हमें बचपन से ये कहा है कि यार जो भी करो पर दूसरों के सामने रो मत. क्यों? लोगों को लगेगा तो पैंसी है. ऐसे शब्द का इस्तेमाल लोग करते हैं क्राइम को लेकर. इसकी वजह से दुनिया भर के मर्द रोने से डरते हैं कि लोगों के सामने रो लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. ये भाई को वो वाला कमेंट दिखाओ अभी जो हमने देखा है, तब उसको आ जाएगा समझ में आंसर. ये रोना सीखो, ये एक मॉडर्न डे स्किल होती है. भाई बंदा कह रहा है रोना सीखो, मॉडर्न डे स्किल है. ये कुछ भी कैपिटलाइज करके कुछ भी फेंक देंगे भाई. ये तो रोना सीखो स्किल है भाई साहब. अबे यार, सोच के तुम लोग नहीं, सोच के उसके सामने देखो, रोते फिरते हो क्या? एक इसके हाइपोथेटिकल सामने भी लेवल रो पे दिया, उसके सामने भी पापा रो मैंने दिया, प्रोफेसर के सामने 600 भी रो रुपए का दिया. कोर्स लिया रोने के लिए. वही insane यार. बंदा स्किल लिख रहा है भाई, डेवलपमेंट. रेज़मी डोंट एवर पोस्ट एनीथिंग एंटी इंडियन और एंटी हिंदू. पागल है क्या भाई? क्या चल रहा है भाई यहाँ पे यार? सोच के देखो, भाई यार मोदी कोई जी आ रहे कोर्स हैं, वो भेज बोल दो रहे मुझे रोने स्किल्स. के लिए प्लीज. हाँ, टॉप 5 स्किल्स फॉर इंडियन युवा. पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा बिग डेटा, चौथा रोना. गाइस, 10 टिपिकल चैट किसी को जानते हैं जो मुझे रोने के लिए कोर्स भेज सकता है? कौन? मुझसे तो नहीं रोया जा रहा यार, मैं तो पीछे रह जाऊंगा. By the way, if you cry in front of like random people and even your partner, they will see you as weaker. Because random लोगों के सामने अगर तुम रो रहे हो तो तुम most likely weak ही हो. इससे मेरे को डीकेजी भाई, तुमने वो देखा है बॉयज में, एक द बॉयज टीवी शो, उसमें एक कैरेक्टर है बिली बुचर. वो एक बार थेरेपी के लिए जाता है. Yeah, he goes to the वो pit. Yes, exactly. I remember that scene. या मुझे वो याद I आ रहा है remember यहाँ it पे. quite well. वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, जिसमें वो दूसरा बंदा हाँ, वो where is your रोने वाला self? कोर्स ही ले रहा होता है. हाँ, मैं 90% लोगों को देख के यही सोचता हूँ, where is your self respect, dude?
और उस पे भी ये सोचो, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है वो भी वैसा वाला जिसका एक हफ्ते पहले ट्रेंडिंग में था, अभी भी ट्रेंडिंग में, तो भाई फिर तो तुम रो के कोर्स लिया तुमने, और फिर तुम बाद में भी उसको प्रैक्टिस करोगे। By the कोई way, वो जो मतलब I don't want to be an yeah, I am an elitist more or less, like aristocrat like sort of guy. जो so called वो है ना साइकोलॉजिस्ट, उसने एमिटी नोएडा से करी अपनी डिग्री, ओके। एंड उसके लाइक फादर इन लॉ ओन्स अ 4,000 करोड़ की रेलवे कंपनी इन यूके। ट्विटर पे भी बहुत अगर बवाल हो मुझे ये रहा सब, अगर मेरा ससुर 4,000 करोड़ की कंपनी ओन करता तो मैं भी लगा लेता प्राउड आर इन माय इंस्टाग्राम बायो भाई। एंड सी द लेवल ऑफ दैट, मतलब आप ये सोच के देखो कि जब इस पे बात भी हो रही थी ट्विटर पे भी, कि समय रैना ने जोक मारा, उसको कैसे कैंसिल करा, ऐसा कैंसिल करा वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पाया है। और यहाँ पे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल तुम्हारे, वो माइक लगा लगा कि जी आपने इसको ऐसा क्यों बोला। अब वो उसको इंटेलेक्चुअलाइज भी कर रहे हैं बड़े लेवल पे, तो दिस इज हाउ क्या ही कह सकते एस्ट्रोटर्फिंग वर्क्स। हैं। दिस इज वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोटर्फिंग। हम्म। बस मतलब completely irremarkable human being. I feel Like like a lot of the influencers, don't you think like they're fake? Like a lot of these guys are just looking at what is the current popular thing to say. They don't look at what's right or wrong. They don't look at whether it is, the critical thinking of it, the research of it, the accuracy of it. They just look at what is the current thing to talk about, and they just repeat that opinion. I think Ranveer fits in that category very well. Is there more of that video? I want to show you something in comparison to this. Is there more? भाई एक कमेंट लेना पड़ेगा। उत्सव कुमार का कमेंट है, बंदे बोल रहे भाई इस पे बैकग्राउंड नॉइज मत लगाओ। भाई इस पे तो लगाना पड़ेगा। 3 कोर्सेज, सुसक के रोना, चिल्ला के रोना, रो तो भाई यार। डिपेंड्स कि आप कॉर्पोरेट लैडर पे कितना ऊपर जाना चाहते हैं। हाँ, नहीं आजकल तो देयर शुड बी अनदर फॉर्म एज़ वेल ना, जिसमें वो आँखों के अंदर वो नैपकिन ऐसे लगा के वो साइड से बस आँसू पोंछने का दिखाते हैं। सोफिस्टिकेटेड रोना वाला ऐसा कुछ। बट हाँ भाई। क्या ही कह सकते हैं। अगर आपको करियर में दूर जाना है, आपको ट्रॉमा का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और उन मुश्किल स्थितियों की डैमेज कम करने के लिए अरे क्या बोल रहा है भाई? लर्न टू क्राई। मेरे ऊपर जाने ट्रॉमा। मैं समझ रहा हूँ वो अबे अगर मैं मतलब जो पॉइंट बोलना चाह रहा है ना, ठीक है, बट डिलीवरी और गाना और 4K तूने इंजीनियर बीच हूँ में वो डाल और मुझे कुछ, अगर मुझे करियर में अच्छा यार, इफ आई एम अ नहीं सोच इंजीनियर के भाई देखो। और मुझे करियर में आगे जाना है तो मुझे अच्छी चीजें बनानी पड़ेंगी ना, या मैं अपने बॉस के सामने अपना ट्रॉमा डंप कर दूं कि भाई आप तो अपने ट्रॉमा से बहुत अच्छे से निपटते हैं, लो मैं आपको नहीं वो दे देता हूँ हाई सैलरी की। नहीं एचआर में सैलरी नेगोशिएशन हो रहा है, कितना लोगे जी? रोने लग गए। अरे यार, क्राई मैक्सिंग, हाँ क्राई अरे मैक्सिंग हो यार, गया, लुक्स मैक्सिंग के बाद अब क्राई यूथ मैक्सिंग आइकन, होगा। यूथ आइकन बाय द वे। और यहाँ पर भी इसने वो एड्रेस नहीं करा, वो मेन जो पॉइंट था कि अच्छा रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, सब बस सोसाइटी पे और उस पर डाल दो। गाइस डू यू थिंक कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रोने से कुछ फर्क पड़ा होगा इसी केस पर? Yeah, if you think चैट you'll बताओ, save चैट बताओ, a चैट few bucks in बताएगी। alimony if you cried in front of the judge. Okay, so all that about mental health, men suppress their feelings. Let's look at this politician, okay, who talked about Men's Day in the parliament. It's a 2-minute video. I ऐसे don't know भी where लोग हैं हमारे पास, Notice हमारे how देश में ऐसे भी absolutely लोग हैं। no one is there in the parliament. we'll find out why we don't see people like these and why men don't share these feelings. A perfect अरे example. वाह, मतलब ऐसा भी होता है? अरे वाह वाह वाह, चलो चलो चलो, का तो मौका देखना दे रहे पड़ेगा। हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसने तय किया तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी, और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं। They're laughing. तो anyway, मैं आपसे, मैं बस कुछ
Yeah, DKG, what are you saying? Boomers Was- genuinely think like this is funny. Yeah, 90% boomer humor is just मेरी बीवी ने मुझ पे जी मटका फेंक के मार दिया हा हा हा. Boomers genuinely think this shit. यस. मेरी बीवी मैं काम पे से घर जाता हूँ, मेरी बीवी मेरे को मारती है, हा. ये इतने सारे इन्होंने ऐसे जोक चलाए हुए हैं ना, नो वंडर वाई फिर इनके बच्चे तो इन्हों क्या ही सोचेंगे, फिर बोलते जी हमारे बच्चे में हीरो नहीं समझते, ऐसा क्यों? अब पापा जी आप होमलैंडर हो ना, इसलिए सुपरमैन होना चाहिए था, बट क्या ही कहें यार. चलो भाई मिक भाई चलो. at least Homelander like was cool. At least क्या बोले Homelander. पापा जी आपकी आंखों से तो लेजर भी नहीं निकलती. और वो भी नहीं निकलती, वो खैर छोड़ो, फिर ज्यादा वो हो जाएगा डार्क. सबसे पहले सर अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बंबई से वाडीनार गया है और दुनिया में ये पहली घटना है. Wait, so she already changed the topic from men to women? मैं भी समझ नहीं पाया क्या हुआ. मुझे भी लग रहा था अरे अभी ये क्या मतलब ये चैनल इतनी जल्दी कुछ चेंज कर दिया. Okay, Why so this men being they should be applauded? celebrated. कि डोमेस्टिक वाटर्स में एक डोमेस्टिक शिप एक डोमेस्टिक पोर्ट से दूसरे डोमेस्टिक पोर्ट पे चली गई. इसमें अपलोड करने की कौन सी बात है भाई? आयरनी देखो ना डीके जी भाई, इस पे 3.7 के व्यू गए इस वीडियो पे बस, और वो भी 4 साल पहले. इससे ज्यादा व्यू तो मेरे चैनल पे आ रहे हैं. समझ रहे हो? अभी टू बी फेयर राज्यसभा राज्यसभा कोई देखता है नहीं, तो लाइक हु केयर. लाइक 4 लोग का नाम बता दीजिए राज्यसभा में बैठे हैं. चलो मिक भाई चलो. ने भी इसको बहुत सराहा है. सर आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू थिंग्स, प्लीज अलाउ मी टाइम. डिमांड्स मेड ऑन वुमन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूंगी. इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन बिकॉज यू मस्ट थिंक लाइक अ मैन, act like a lady, look like a beauty queen and work like a horse. और अभी जो मेरी बहन ने बात की, तो सर मेरा कल एक कार्यक्रम था स्त्री, और ये नाट्य कथा 2 घंटे की, उसमें मैंने कहा है आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं. तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए. सर ये कौन अधिकार देता है? ये वंचित. अरे बट आप तो आदमी के बारे में बात करनी थी ना मैडम जी. Guys, the title is Men's Day should also be celebrated with Women's Day. Congratulations. देखिए 50% फीमेल रिजर्वेशन लागू होने वाली है, अगले राज्य में इंट्रोड्यूस हो जाएगा. मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ. ये अभी तो कुछ और, ये तो इससे ज्यादा तो कट उसमें नहीं होते 30 सेकंड की रील जो बनती है एडिट वाली. अरे यार मतलब Well, डाला. The idea was so she was elevated to the Rajya Sabha as far as I can see. पद्म विभूषण बहुत बढ़िया भाई. अच्छा यहाँ पर एक कमेंट लेना पड़ेगा. The idea was that you know that you enjoy the cream and she enjoys the coffee. Okay, so I hope you enjoyed the cream, which was mockery of men in the beginning. That was sweet, guys. That was. भाई ये तो एक भाई का बड़ा अच्छा कमेंट है, इसको लेना पड़ेगा. Yes, because तो क्या लिखूं सर? Because she did not get support from other men. भाई like let me just tell you you are something not real completely quick. wrong. Right. Her former husband was Lalit Man Singh, who was one of the topmost diplomats to ever be in India. Her father-in-law introduced her to Kechulan Mohapatra, who was a legendary classical dancer, who then trained her by the way of which she entered the Rajya Sabha.
और फिर उसके बाद ये बोलना है। यस, तो मुझे वंचित शोषित, मुझे राइट्स नहीं मिले। कमाल है भाई यार, अगर मेरा मेरा पार्टनर टॉप मोस्ट डिप्लोमेट होता, मैं पूरी जिंदगी बड़े बड़े मैंशंस में बाबुओं की तरह रहता, फिर मेरा अरबपति ससुर मुझे किसी उससे मिला देता, लेजेंडरी डांसर से, फिर मैं खुद एमपी बन जाता, जिसकी फिर पूरी लाइफ की वो पेंशन मिलती है जिसको। भाई ऐसा सोशल वंचित तो सबको मिलना चाहिए यार। वही तो। मीनवाइल एक लड़का है जो फटी हुई टूटी फूटी स्कूटी में डिलीवरी करता घूम रहा है लाल बत्ती पे, पोल्यूशन ले रहा है, वो हवा ले रहा है 600 आईक्यू वाली, वो नहीं बात कर रही सारी की सारी। मेरी बात चल रही है, ये मेरा फ्यूचर होने वाला है लॉ करने के बाद। मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बोलने वाला था, अच्छा नहीं बोला। चलो थैंक्स, मैंने जल्दी वो कर दिया ना। बट या मतलब क्या बोले यार, मतलब हैकर है भाई, हैकर है। हाँ भाई, हैकर ही है ये Okay, सारे। let's look at one last video, okay? One हम्म, last. These are our legendary politicians. As it's International Men's Day, I'd just like to wish you all a very happy day. And we'll call on Deputy Mary Lou MacDonald. Every day is Men's Day. Right now. Understanding Right, Order you, on that 38, note. Deputy MacDonald. You took me aback there, Karen Corley. Thank you. Well, congratulations, guys. These are the people who want men to talk about their issues. Never before have I ever बोलते felt नहीं the हैं। urge to nuke the But- Irish Parliament. By the way, I did not play the Jess Phillips clip because if I played that, everybody would get triggered. So I'm not doing that today. रोहित भाई बोल रहे हैं आर दीज लेजिट वीडियोस और मीम वीडियोस। नहीं भाई, ये वीडियो नहीं है और हम भी रियल नहीं है, और आप जो देख रहे हो वो भी रियल नहीं है, बस आप सपने में हो। ठीक है, चूटी काटो खुद को, ऐसे ऐसे करो, ऐसे पिंच करो खुद को, आंखों आप जग जाओगे। और आप अभी भी 2012 में है, ठीक है? ये 2025 का बस एक सपना आप देख रहे हैं, डिस्टोपियन वाला। और वेट, आगे बढ़ते हैं। नॉट इजी, क्या है ये नॉट इजी? इस वीडियो पे भी रिएक्शन देते हैं। यस, यार अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वो विल बी हियर ऑल डे ऑल नाइट, सॉरी, अगर हम इसी स्पीड पे चलते रहे तो। नहीं थोड़ा जल्दी करते हैं। मिक भाई आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो मैंने लाइक Yeah, चेक द no. या आई थिंक दिस इज द सेम वन दैट यू आल्सो सेंड मी। लड़का होना भी आसान नहीं होता। सारे सपने छोड़ने पड़ते हैं जिम्मेदारियों के चलते। पैदा होते ही उसे उम्मीदों से घेर लिया जाता है। ख्वाहिशों को दबा कर रखना पड़ता है हंसते हंसते। वो मायूस होगा तो संभालना उसे खुद पड़ेगा। कितना अजीब है ना, अपना दुख दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि जज करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है ना। और मर्द को कभी दर्द हो ही नहीं सकता। कितना कमा लेते हो? नाम पूछने से पहले ये सवाल पूछते हैं लोग। तुम्हारे साथी देखो इंजीनियरिंग करके कहां पहुंच गए। तुम भी उनके जैसा कुछ करो, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। घर तुम्हें ही संभालना है। जिम्मेदारियों का कुछ एहसास भी है कि नहीं? अच्छा नहीं कमाओगे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। जिंदगी का आगे कुछ सोचा भी है कि नहीं? उसके दिल टूटने की भी कोई वैल्यू नहीं होती। ब्रेकअप को भी काट के चली गई बोल के मजाक बनाया जाता है। लड़का होके रो रहा है, छी 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 छी। उसके रोने को भी एक गंदी बात बताया जाता है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बेतुकी बातों पे भी उसे जज किया जाएगा। कैसा लड़का यार, तुझे क्रिकेट पसंद नहीं? एक्शन फिल्म्स की जगह रोम कॉम देखता है ब्रो, तो चूड़ियां भी पहनी ले फिर। ऑल मेन आर डॉग्स, ये आजकल एक नई स्लैंग बना रखी है, और ऐसी ही चीजों ने लड़कों की जमाने में उनकी छवि बिगाड़ रखी है। लड़की का इल्जाम चाहे झूठा ही हो, पर वो कह रही है तो सच ही होगा। और उसकी बात पे विश्वास भी कौन करेगा? वो लड़का है ना, उसने जरूर कुछ किया ही होगा। बाहर से मूंछों को ताव देके वो खुद को स्ट्रांग दिखाता रहता है। अंदर से उसका दिल भी बिखरा हुआ है यार, पर वो कौन जानना चाहता है।
बाइक को धीरे चलाते हुए, सब ख्याल उसे डराते हुए, घर से काम ढूंढने निकला था, खाली हाथ ही वापस आते हुए। अब जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है, ये बिल्स जो पेंडिंग है उसे ही तो भरना है। कोई मिलता है तो हाल नहीं पूछता, एक ही सवाल करते हैं सब, बेटा आगे क्या करना है। लड़का होना भी आसान नहीं होता यार, उसे भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो टूट कर भी टूट नहीं सकता, इसीलिए उसे हंसते रहना पड़ता है, हंसते रहना पड़ता है। किसी भाई ने चैट में लिखा भी हुआ था वर्चुअल हग्स नाम की भी कोई चीज होती, तो भाई ये हग वो वाला गले मिलने वाला कहीं कुछ और वाला वर्चुअल समझ लो तुम। बट इसी वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो चलाना चाहूंगा। इस वीडियो को देखिए, लिटिल सेंस में ये असली वीडियो है बाय द वे, और ये बहुत वायरल भी जा रही थी एक्स के ऊपर। किसी किसी को लग सकता है अरे ये तो फिर वही शेर व शायरी वाली वीडियो चला दी जस्ट टू थोड़ा सैड माहौल। भाई अभी रियलिटी में देखना तुम्हें, ये देखो इसको चलाते हैं। Look, आई होप आप I सबको ये agree with विजिबल what he होगा। says. What he says is of course right, हम्म। but I cannot help but find this a bit cringe. या द वे इट इज Not पोर्ट्रेड वो like लग what he सकता है। says is right. हम्म, It's a bit हम्म। cringe. Right? Poetry. मुझे like sort of mic poetry हमेशा cringy लगती है थोड़ी सी. But it's not nothing against the guy or what he's saying. No, I think it was beautiful. I approved. दिल को छू गए मिक भाई हैं, दिल के गिटार बजा दिए सब। It was balanced. Like Yeah, he put okay. an effort into it. अब यहाँ रियलिटी में आ जाते हैं। ये वीडियो है बेड रिडन, ये बहुत वायरल जा रहा है बाय द वे। बेड रिडन सीए अबैंडन्ड बाय वाइफ, जिनको सीए नहीं पता है कुछ और मत समझ लेना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यूज करे जाने वाला शॉर्ट फॉर्म है। लूजेस 5 फ्लैट्स, 5 फ्लैट, 30 लाख सैलरी एंड शी फ्लीज ड्यूरिंग हिज इलनेस इन ऑर्फनेज। और ये डेली भारत न्यूज़ ने भी इसको डाला है। अ क्वालिफाइड सीए फ्रॉम इंडिया वंस अर्निंग 30 लाख एनुअली एंड ओनिंग 5 फ्लैट्स, वाइफ लीव हिम इन ऑर्फनेज एंड रन अवे। ट्रेजेडी struck when he fell seriously ill, leaving him bedridden and vulnerable. During his illness, his wife allegedly deceived him, siphoned off assets, and fled, abandoning her sick husband. Dude. Left with nothing, the man now struggles with shattered health, finances. His story highlights the devastating betrayal faced during personal crisis and has evoked strong sympathy on social media. अब आपके What सामने a, दोस्तों by the क्या? way, Kali Goli, what a companionship, bro. Well, See, Kali for Goli, me, you're getting roasted by reality. Okay, play. I'm just playing around. I'm just playing around. well, it wasn't. Well, when I said what I said before, it was in like a hypothetical sort of. Yeah, but don't get married. Please don't get married. ये मिक what I भाई said was more. टीम में गुड़ गया। It was more of like in a void, but like this is genuinely want to tell people: do not Like get married. You were saying it as a figure of Like- speech. I can understand that single men who have never had a companionship, they desire it, and that desire can lead them to think that it's the best thing. And maybe the first time you obtain it, it will feel like the best thing. But like I said before, every trap has honey around it, and honey feels good. But then enjoy the trap later. Professor, play that video. I think it's good. Let the guy explain what's going on, because they talk about men suppress their feelings. Let's see when men don't suppress their feelings, what happens. I would क्या love होता to है see the मैजिकली? comments on this one. 1.6K. हाँ, 1 लाइक 3 है और कमेंट 1.6 के हैं, तो वेरी अनयूजुअल। ऑलराइट, इसको चला देते हैं। थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मिक भाई को ऊपर की तरफ ले जाते हैं थोड़ा हवा में, और कर दिया है ये अपडेटेड। अब बाय द वे दोस्तों, आप भी बताएं क्या आपने ये वाला शहद खाया है और कितना खाया है, और क्या आपका इस शहद को खा के पेट खराब हुआ है, जिसके बारे में मिक भाई ने बात करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सर टीसी वर्मा। टीसी वर्मा नाम है सर। वर्मा जी घर? सर मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे।
3 साल से बता रहे हैं। और बाय द वे दोस्तों, मैं बीच-बीच में काट-काट के ही हम इस पे रिएक्शन दे पाएँगे, अदरवाइज़ कॉपीराइट का जो डंडा है, वो पंख लगा के उड़ता हुआ आ जाता है कभी-कभी। दैट्स Can you व्हाई। increase the audio? Just check the audio. Okay. नहीं, फुल ही Okay. है भाई, फुल ही है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ब्रेन हेमरेज हुआ था इनको, बेचारे को। अरे यार! एक प्राइवेट कंपनी में ऑडिट कर रहा था, उसी दौरान मुझे 4 जुलाई 2021 को हेमरेज हो गया था। 2021 में हेमरेज हो गया था, ऑडिट करते थे ये। यार, और 30 लाख है तो बहुत ही कोई मतलब पावरफुल और टॉप लेवल की पोज़ीशन पे होंगे, आई एम गेसिंग। ऐसे में अक्सर ऐसा ही होता है, परिवार ने साथ नहीं दिया सर। एंड जो कंपनी से कंपनसेशन एमए मिला था वो रख लिया और मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। डूड, He's a homeless shelter, I think. कंपनी से जो कॉम्पेंसेशन मिला था वो बता रहे हैं अपनों ने उसे अपने पास रख लिया और इनको ऑर्फनेज में ऐसा ऐसा सुनने समझ में ऐसा आ रहा है मेरे को सुनने के बाद। उसके बाद ब्रेन के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं सर और काफी हद तक ठीक हूँ। चलो भाई, अच्छी बात है। जब बहुत बुरा हाल था, बोल भी नहीं पाता था और इनसेंसेशन में था, टोटली बोल नहीं पाता, पहचान नहीं पाता लोगों को। लेकिन इन लोगों की मेहनत से, खासतौर पे थेरेपिस्ट जो हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है मेरे ऊपर और इस लायक हूँ कि अब कुर्सी पे तो घूम ही लेता हूँ। चलो भाई, बिग शाउट आउट टू द थेरेपिस्ट्स। पहले बिल्कुल बेड पे था, आवाज पूरी वापस है सर। यार, एक तो ये गाने इतने मत लगाया करो यार, तुम न्यूज़ वाले चैनल हो, इतना गाने मत लगाया करो यार। मेमोरी पूरी एग्जैक्ट है, बस ये एक हाथ एक पैर पैरालाइज है। वैसे मेंटली बिल्कुल फिट हूँ सर। रोहित भाई का कमेंट लेना पड़ेगा। ही वुड हैव रिकवर्ड अर्लियर इफ हिज फैमिली और वाइफ सपोर्टेड हिम। या बट एज मिक भाई सेड, बीजीएम इज अनोइंग। या एम एस धोनी Well, भाई, आप अकेले what नहीं can हैं। you say on this? I mean, Well, this my is whole point of putting all these clips was Mhm. um, attack the root of the problem. If these people believe that the number one issue is that men don't talk, then talk about the reason why men don't talk. Instead of just saying men suppress their feelings and blaming them, talk about the people who don't let them talk, right? All these spaces that are not available. Why don't you call out the parliament for not hosting Men's Day or not having a day dedicated to talking about men's problems, right? Why don't you talk about the families who disown their husbands or sons for the purposes of monetary gain, or they seem like a burden? So give the lecture to them. What's the Yeah. point of giving a lecture to us? But this is why I think it's performative. I think what matters to this political lobby is the optics of the argument and not the solution itself. Let's just Exactly. fill up the space with these trivial issues. Let's not, so real issues don't have any space to be discussed. So yeah, I think this is unfortunate. I feel sorry for this guy, but at the end of the day, men are like chewing gums. Get the juice out of them. When there is no juice left, dump them. सो सैड। मतलब ये ऐसी चीज है ना, डीकेजीएन में भाई, ये इस तरीके की जो आप कह सकते हो एक तरीके का ना, ये स्टोरी या मूवीज में ऐसा लग सकता है किसी को कि नहीं यार, ये तो मूवीज में होता होगा, इतना ज्यादा सैड और ऐसा ब्रूटल रियलिटी टाइप की चीज। बट यहाँ पर भी हो रहा है भाई, आप अपने सामने देख लो। और ऐसा नहीं है कि वो खाली उसको एक बीमारी या एक बार उसका ऑपरेशन हो, उसने खुद बोला 6-6 बार हुआ। ऐसे टाइम में भी अगर कोई छोड़ के चला जाए, इसलिए तो बोलता हूँ ये जितने भी अपने जो है अटैच कर लेते हैं ना अपनी एंटायर आइडेंटिटी को विद द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग, और जितना उनके पास सिक्स पैक एब्स है और एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बहुत ही गलत चीज है। यू आर नॉट द जॉब दैट यू हैव, यू आर नॉट द कार दैट यू हैव, यू आर नॉट समबडी। मतलब तुम अपनी आइडेंटिटी को किसी मटीरियलिस्टिक चीज या इवन मैं तो बोलता हूँ रिलेशनशिप से भी डायरेक्टली मत जोड़ लो। वो बहुत ही गलत तरीके से बैकफायर करेगा, क्योंकि आदमी ने जब अपनी आइडेंटिटी किसी और चीज से लगा ली और वो चीज चली गई, तो तुम्हारी आइडेंटिटी फिर उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा रह जाता है तुम्हारे दिमाग में, और वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है और टफ टाइम होता है वो सबके लिए जो भी उससे गुजर रहा है। I'm just
And I was looking at this guy, and you just imagine how much hard work he must have done to just reach that position. You have like a 30 lakh salary, you have like five flats, and like just you are at the top of the Indian food chain, right? The sheer amount of hard work, and during that same time, his wife must be having a lot of fun. Before she met him, then I'm sure she met him through arranged marriage or whatever, and then she must have had a while she was married to him, and then when the bad thing started, she ditched. Just And just imagine, DKG bhai, just imagine the amount of pain that this person would have been through. मतलब आप सोच के देखो, जब उसको ऐसा लग रहा है कि जी मैं मेरे लिए तो कोई भी नहीं आया, वो कितना दर्द वाली सिचुएशन होगी। लाइक दर्द इज ऑल्सो, मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म आई एम यूजिंग इट, बट सोच के देखो कैसा लगा होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में यू आर जस्ट एम्प्टी, मतलब आप खाली हो, कोई और है ही नहीं। और ये तो मेल लोनलीनेस वाले जो छोटे-छोटे वो जो आर्टिकल आते हैं क्यूट लिटिल, जैसे अभी दिखाया तमिक भाई ने भी, वो तो बिल्कुल दूर ही चली जाती है। वो चीज़ क्या है जो ये इस बंदे ने झेली है, कि आपने जो पूरा जीवन पैसे कमाए, मेहनत करी, वो इस चीज़ के लिए। एंड सो सैड, सो सैड। किसी के भी साथ ना हो, मतलब भगवान किसी के साथ ना करे। और आई आई होप एंड लाइक आई आल्सो प्रे कि स्पीडी रिकवरी हो और फिर से कम बैक स्ट्रांग है। और इस चैट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सो थैंक यू गाइस फॉर योर विशेस, वेल विशेस फॉर दिस पर्सन। बाय द वे, कुछ सुपर चैट्स हैं, उनको ले लेते हैं एंड देन वी कैन मूव अहेड। टेक्नोक्रेट भाई का सुपर चैट आया हुआ है। प्रोफेसर, ये संडे का एक हम नया कॉन्फ्रेंस मिस किया, बहुत सही कॉन्फ्रेंस था मेंस डे पे, बहुत लोगों से। आई थिंक ये भाई नॉर्थ साइड में था ना, सो आई माइट, मतलब मेरे लिए यार फिर बहुत मुश्किल हो जाता ट्रैवल करना। this happened in like Delhi, no? या आई थिंक सो। See, everything टेक्नोक्रेट is भाई का, making fast. Everybody wants to squeeze money from vampirism because they have been the largest consumers. This is the economy. Yes, and then they are also the largest voting bloc. या शी They are the, इकोनॉमी, इसके ऊपर एक yes. वीडियो थी, वो पहले मेंबर्स ओनली थी, तो यू कैन आल्सो चेक आउट दैट वीडियो शी इकोनॉमी के ऊपर, जब हम मनी मंडेज वाली लाइव करते थे। टेक्नोक्रेट भाई बोल रहे हैं एक और सुपर चैट के साथ, आई एम नॉट अलोन, आई एंजॉय माय ओन कंपेनियनशिप। आई थिंक ये ना इसको भी डाल देते हैं, सॉलिट्यूड को भी लोनलीनेस में चोगा पहना के दिखाते Oh हैं कि yeah, अरे देखो। मतलब, Yeah, this so happens a lot. by the way, guys, that was one difference between the Gallup poll and these Yuva feminist etc. studies, is that Gallup poll actually asked men, like, do you feel lonely? It's just not that you're isolated itself doesn't mean that you're lonely, right? Like some people are isolated by choice. They prefer that. So feminist studies are mostly counting the men who have not made any contact with another person for X amount of time. They're describing that as loneliness. Gallup poll is talking about the people who actually identify as I'm feeling lonely. So it's a misrepresentation in my opinion. I'm not alone. I enjoy my own companionship. Yeah, I'm with you. I think we're in that group. So if a survey counted me or you as lonely, I think it's like they're trying to inflate the numbers more than what it should be. मेघ भाई, ऐसा नहीं है जैसे जब स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट होते हैं ना, जब सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नाम लगाते हैं। बंदा बोल रहा है, अबे भाई मैं नहीं हूँ लोनली, मैं लोनली नहीं हूँ। तू है, तुझे नहीं पता, तू है, तुझे नहीं पता, वैसा वाला हिसाब है ये। रिडिकुलस मैन। Yeah. These intellectual इनक्विजिट students शादी नहीं किया तो बुढ़ापे में कौन देखेगा? Should be known to this, क्या होगा शादी करके? You just like मेहनत करो, और मतलब अगर तुम बुढ़ापे में तुमने शादी नहीं करी है, do you think how much money have you saved by not marrying? Do you even have the slightest idea? You are telling me you can't hire a Bangladeshi of the street to look after you when you old. So we बाय द shouldn't वे, hire Indian. चैट वैसे बता देना, अगर नहीं करी मैरिज, तो उसके बाद कितने पैसे आप जोड़ पाएंगे और उसके कितने PS5 आप खरीद पाएंगे, जरूर ये चैट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। Yeah, so this is covered. Let's go to the next one.
ये ज़रूर लेना पड़ेगा मेंस डे के ऊपर नोरा विंसेंट ये बहुत ज़्यादा वायरल भी जा रहा है बाय द वे ये जो वीडियो है स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि इसके ऊपर पहले भी बात करी जा चुकी है यूट्यूब पर बट इंस्टाग्राम पे दिस इज़ वेरी न्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ किसकी हम बात कर रहे हैं और ये हिंदी में है बाय द वे। ये पूरी जो वीडियो है ये हिंदी में है तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी जो हमारी हिंदी ऑडियंस है। यह साबित करने के लिए कि मर्दों में सहानुभूति की कमी होती है, एक आवाज प्रशिक्षक और मेकअप आर्टिस्ट को काम पर रखा ताकि वह खुद को एक पुरुष के रूप में छुपा सके। उसका मकसद था मर्दों की घिनौनी जीवन शैली को उजागर करना, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला जिसने उसकी पूरी सोच हिला दी। सबसे पहले वह एक बॉलिंग क्लब में गई। वह सोच रही थी कि वहाँ मर्द आपस में झगड़ेंगे, गालियां देंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, पर हुआ उल्टा। वहाँ के सभी पुरुष उसके यानी उस नकली मर्द प्रति बहुत दोस्ताना थे। जब उसकी बॉलिंग स्किल्स कमजोर निकली तो किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सबने आगे बढ़कर उसे सिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब एक सदस्य को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, सब उसे गले लगाकर सांत्वना देते हैं। ये देखकर वह हैरान रह गई क्योंकि ये सब उसके सोच से बिल्कुल उल्टा था। फिर उसने पुरुष के रूप में महिलाओं से डेटिंग करने की कोशिश की। उसे लगा था कि अपनी अच्छी शक्ल और नारी जैसी समझ से वह आसानी से लड़कियों को प्रभावित कर लेगी, पर यही प्रयोग का सबसे मुश्किल और थकाऊ हिस्सा साबित हुआ। डेट पर लड़कियां तरह तरह की मांगे रखती, थोड़ी सी भी असहमति या कमी पर नाराज होकर चली जाती। जब मैन और ये ना बहुत सैड लाइक जी डीके जी भाई go ahead. you a lot of women genuinely think this. मैं तो बहुत ही जेंटलमैन की ट्रीटमेंट देता अगर मैं लड़का होता। No, you would have been 5 feet 5 inch. Anyway, MS Dhoni Titan, Desi Kali Goli, after following Vyuga Kishato, I don't feel lonely. He taught me how to be a true lame wolf and fight like an emperor. Vyuga Kishato, Beyblade वाला? It was like Yeah, I Beyblade also था ना उसके पास एक like lightning dragon जिसके पास था। I What? also think this. Okay, so Game since उसके you've पास seen it, like, what whatever. about him? ठीक है भाई। What's the correlation with his character and loneliness? I have zero idea. But this makes me यानी want to watch Beyblade again. Yeah, बता देना MS धोनी भाई बताओ यार कौन सा वाला है क्योंकि बेबलेट में भी आई थिंक बहुत सारे एडिशंस हैं। This I think was the he's just mentioning the Lightning name. Dragon. Great villain था series का। I also looked it up on YouTube and it shows Beyblade clips. I haven't seen him. I'll check him out. You know, El Dragon. what the spiritual meaning behind that character is. All right. जब वह समझाने या तर्क करने की कोशिश करती तो जवाब मिलता, तुम मर्द सब एक जैसे हो, बस बोलते हो, करते कुछ नहीं। शुरुआत में उसने सोचा ये कुछ महिलाओं तक ही सीमित है, लेकिन उसने प्रयोग को 18 महीने तक बढ़ाया। भाई साहब ये भी बहुत आर्गुमेंट मारा जाता है ना कि नॉट एवरीवन, कुछ गलत लोगों की वजह से आप सबको कैसे बोल सकते हैं ऐसा। अरे भाई आप ये तो हम नहीं 99% बोल रहे, बुरे ये लोगों तो की खुद वजह कर से देना। 1% अच्छे लोगों को क्यों कह रहे हो? और ये सेम So लॉजिक sorry, I जब आप cut you बोलते हैं off. ऑल मैन आर XYZ और ABC, तब तो वो याद नहीं आता आपको ये लॉजिक, तब तो आप उसे अच्छे से सोने के लिए रख देते हैं कि बेटा जाओ सो जाओ, अब वापस मत आना। हाँ। No, I'm going to अमेरिका के give. कई राज्यों में They continue. Yeah. उसके बाद बताऊंगा। आकर दोहराया और हर बार नतीजा एक जैसा ही निकला। इन अनुभवों के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। वह मर्दों के लिए सहानुभूति महसूस करने लगी और धीरे धीरे एक दृढ़ नारीवादी से पुरुष विरोधी नहीं बल्कि नारी विरोधी बन गई। आखिर में उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, सेल्फ मेड मैन, और कुछ समय बाद उसने अपनी जान ले ली। यह कहानी अमेरिकी लेखिका नोरा विंसेंट की वास्तविक जीवन पर आधारित है। इस नारीवादी और बाय द वे ये विकी पेज है और ये ऐसा नहीं है दैट यू नो इट्स जस्ट फ्लफ कि अरे इंस्टाग्राम में रील चला के दिखा दी बस। भाई ये पूरा विकी पेज, आप इस पर अगर जाएंगे और पढ़ेंगे ना इसको, नीचे वाला जो पूरा पार्ट है विंसेंट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। या वी कैन एंड एक और चीज है इसमें, विंसेंट was described as a libertarian who was critical of postmodernism and multiculturalism too.
Yeah, I आई think थिंक हम her कर belief सकते हैं. her belief system And I don't broke. think It's libertarians making, usually are not critical of those two things. but don't you think Mhm. like I think it'll be a good system to suggest girls and women to go through this experiment in their lifetime. It will humble them. You know, it should be a mandatory uh, thing they should have to go through. Do 6 ये तो months. At least do 6 months. Come on, guys. ये वैसा हो गया मिक भाई. आई थिंक मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोल रहे थे सारे मर्द जात को जेल में डालना चाहिए और उसके बाद उनको जेल में काम करेंगे और अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे तो फिर हमें रिलीज कर देंगे. ऐसा वीडियो भी आया था कि उसके बाद हम आपको चांस देंगे. तो दिस कुड बी इक्विवेलेंट टू दैट वन. बट आई थिंक इसके Yeah, ऊपर बात कर सकते हैं. वैसे बहुत wasn't there इंपॉर्टेंट चीज है also ये. a trans man recently? Somebody posted on our subreddit, I think, a few months ago, and so trans man, to simplify, a woman that transitions to a man, was Okay. bawling on the video. I thought being a man was so easy, and then I became a man, and then I found out how hard the life is. So I think their belief system is built that way because this is all they hear. But when you have to, I think lived experience is the greatest proof you can have of reality. And Yeah. until you're personally affected by it, you'll never really learn the depth of the, you know, The love pain and and hate yeah. that is attributed to our gender. एग्जैक्टली. और ये ना बस बोलने वाली बात है कि एम्पैथी मींस पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी शूज. भाई जब तक वो रियलिटी में नहीं देखोगे ना तो बहुत मुश्किल होता है कनेक्ट करना. Yeah, it's kind of like armchair criticism. It's like Yeah. monkeys muddying the pond because they don't have to drink from it. So you can say men have it easy because you're not the one that is living it, you know? Okay, so Dhoni's saying he trains himself in the jungle, that Beyblade guy. He doesn't rely on anybody. Something about Ryugo is really inspiring. Don't know how. Okay, a lot of people have seen it, I guess. All right, thanks, guys. देखना I'll पड़ेगा keep ये going. भी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों Yeah, और maybe आपको दिखाते very हैं. popular back in the day. ओके. Yes, I was actually saying something, right? मैं ये कह रहा था And आगे so बढ़ते हैं basically, क्योंकि this is a lot of consideration, and I'm going to like sort of go against some of the probably the most core tenet of the black pill space where I'm in, at least the biological black pill space. That is, ओके. in India, the fair skin pill is more than the height pill, right? So if your skin is fairer, then even if you're shorter, you will be more physically attractive to an average female. ओके. I mean, I guess in India it's not that controversial, but when you sort of put that out in like more Western people, like more Western spaces, they tend to lose their mind over it because the common orthodoxy of the black pill says that the height pill is supreme. And that's it. Okay. So are you like I just want I'm curious on this. लुक्स मैक्सिंग और ब्लैक पिल दोनों सेम है क्योंकि कंफ्यूजन काफी सारे ऑडियंस को भी रहता है, या इसमें से कुछ पार्ट इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, कुछ नहीं है? व्हाट इट इज ऑल अबाउट, लाइक इफ यू वांट टू So a एक्सप्लेन. lot of look maxing basically means to make yourself look better, right? Right. So if look maxes are two types. One are just like general, lot of red pillars in look maxing too. We're going to have, we're हाँ going to हाँ. wear our clothes better, we are going to groom better, plan this gonna, we are going to get more females. So there's a huge amount of those, but there's a small minority of black pillars. Now a black pillar genuinely believes that he is not going to get any more attractive, that he has an unchangeable genetic flaw which is going to make sure that he is not going to be attracted to anyone. So it is sort of contradictory that way that a lot of black pillars are also look maxers. While doing that, they are not going to get better, they're not going to get more attractive because they have some serious genetic flaw. Okay. So not all black pillars are incels, by the way. Right. So if there's a guy who's good looking and tall, he can also be a black pillar. He just recognizes that looks are above everything.
That makes you a black pillar. All right. Seems like a spectrum to me कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें एक जगह पे हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते एंड Of इसी course, से yes, you ब्लैक can't do that. हाँ इसी ब्लैक पिल वाले पॉइंट से मैं आना चाहूँगा ऑन दिस थिंग विच इज़ ब्लैक पिल्ड OWM कॉट ऑन कैमरा। जी हाँ, OWM जिनको नहीं पता इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके अपने चैनल पे, ओल्ड वाइज मैन, वो गीगा चैट्स जो अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं या जिनकी ओपिनियंस जो होती हैं दे आर अ बिट पॉलिटिकली इनकरेक्ट बट मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली ऐसी ओपिनियंस वो दे देते हैं। ये इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया गई और इस पे लाइक्स बहुत सारे गए हैं, कमेंट्स भी बहुत सारे, वायरल जा रही थी ये वीडियो बाय द वे। ये एक व्यक्ति का इंटरव्यू है, द गाय विद रोज करके कि ये इंस्टाग्राम पे हैंडल है, ये इसी तरीके का कंटेंट लाते हैं, रैंडमली मर्दों से इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनके व्यू पॉइंट एंड देन ही पोस्ट दीज काइंड ऑफ वीडियोस। लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं महाशय। The audio is gone. Wait, can you guys hear it? I can't hear it. आवाज नहीं आ रही? चैट बताओ No, यार, no, I आवाज नहीं आ can't. रही। I think the audio is Share- fine. Have you shared the tab or the screen? Because audio is not being captured. ओके लेट मी डू वन थिंग। नो साउंड, ठीक है। एक बार चेक करना, आई थिंक मेरे एंड से कुछ इशू है। Yeah, okay, sure. औरत जात से ही नफरत है। उसने ही मेरे को औरत जात से नफरत है। औरत जात से ही नफरत है। उसने ही मेरे को बर्बाद करा। जिसको मैंने जी जान से चाहा था वो मेरे को धोखा देके चली गई। अब आप समझिए वही दुख था। सब मतलब ही नहीं है। बर्बाद जिंदगी से सिखवा ही क्या करे जब तू ही बेवफा तो तेरी फरियाद क्या करे। कोई ऐसा इंसान है आपके जिंदगी में जो आपको बहुत दिल चाह के प्यार करता है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा? मेरे को कौन प्यार करेगा यार? ऊपर वाले को खूब परेशान करते थे, वो मना करता था अपने बच जा, तो बहुत बेकार दुनिया है, बहुत बेकार नगरी है ये नगरी बहुत बेकार है, पाप की नगरी है। उसने अपने को बनाया था, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ अपन उसको परेशान करते थे, वो मना करता था, अपन नहीं मानते थे। तो उसने कहा अच्छा तू जाने ही मांगता है तो ले जा। फिर उसके बाद अपन कहते हे भगवान उठा ले, कहता नहीं सारे पाप भुगत के आपको। तो मना करता था बच्चा मैं तेरे को अपने लिए बनाया था, जैसा खेलेगा कूदेगा, मेरा टाइम पास हुआ, नहीं माना। अब सारे पाप भुगत गया। अब नहीं आते आंसू, पहले आते आ जाते थे। बिल्कुल पत्थर हो गया। मैं इंसान मत बनाना, हालांकि तू जानवर बना देना। इंसान बहुत बेकार चीज है, स्वार्थी है इंसान। आज दुनिया में सब स्वार्थी लोग हैं। शादी नहीं की है? शादी नहीं करी मैंने। क्यों? दुनिया में घूमने आया मैं। भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे बेचारे आने वाले क्यों दुख पाए? बुरा नहीं मानना, अपन तो चले जाएंगे, उनको देखने आएंगे क्या पता। मेरा बचपन तो बहुत बढ़िया था यार। मेरी माँ ही बचपन में मेरे को छोड़ के चली गई, 2-2.5 साल का था जब मेरी माँ मर गई। मेरी खुद की माँ, मैंने अपनी इन हाथों से माँ को दी है। मेरे बाप ने हाथ पकड़ा के लगाया। क्या बोले? आपकी मम्मी की तस्वीर नहीं है एक भी? नहीं है यार, थी मैं क्या कहाँ गई भगवान जाने। जब बचपन में ही घूम गई हो तो चेहरा याद है? चेहरा तो याद रहता, अब क्या करें। अच्छी थी मेरी, सही में। मेरे पिताजी भी अच्छे थे, चले गए, उनको भी अगली थी। तो औरत बहुत बेकार चीज है संसार में। औरत बनाया बहुत बेकार लोग, बहुत कम ही औरत अच्छी है, बाकी सब बेकार है। सही में बहुत कम। आपके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखे यार, हिम्मत मत हारना बस।
So wait, so I didn't understand what is his issue with life. Like, I feel like he was happy with his mother. He never married. Cause Why? जिससे जिससे लगा उससे नहीं लगा, मतलब जिससे दिल लगा उससे दिल नहीं लगा, ऐसा वो। Oh, हाँ, okay. बिट्रेयल वाली बात है आई थिंक। एंड ही इज वेरी वेरी लाइक, मतलब अब ये देखो गुलाब के फूल से वो कितना खुश हो गया, एक स्माइल आ गई। और ये तो एक मीम में और हर जगह पर ये पॉप That is कल्चर में बोला भी जाता है कि द ओनली टाइम अ गाय that is रिसीव्स फ्लावर probably इज the ऑन दैट। only time he has been appreciated for decades, just for being. हैप्पी एंडिंग हो गया। I saw this. He's a very wise man, but well, what can you say? या But this was not the black pill. It was this the black I mean, pill? it's a black pill if you look at it, right? A lot of या black pills in it. हाँ, And yeah, there are लाइक अ like शेड hundreds of शेड। such cases, by the way. Oh, okay. I guess it's the first time I've seen a unmarried guy be a little bit sad, I guess. Usually I see happy. I think see I don't think he's unhappy because of like his relationship status. He's unhappy because of the miseries of life that he has encountered and he has faced, and he's Yeah. still standing like a rock. मतलब वो Nothing निशान की understand. तरह है, वैसा, like battlefield Nothing scar understand. जैसा। Please tell Masculinity Rocks to shut up. You're banned. Go away, bro. या वो बिट्रेयल वाली बात है यार। अब मिस्टर फिलिप्स भाई कह रहे हैं प्रोफेसर भगवान को फोन लगाओ और उसके बाद खुदा को लगाना। भाई मेरे को तो स्पैम में डालने का मेरा कोई नहीं उठाता यार। मैं मिलाऊंगा भी तो बस हो जाएगा नंबर बिजी ऐसा। बट इसने जो स्टार्टिंग में बात बताई ना, ही इज आल्सो कनेक्टिंग इट विद स्पिरिचुअलिटी एंड लाइक रिलीजन। इट इज इन सम वे अ बिट सिमिलर टू गार्डन ऑफ ईडन वाली जो स्टोरी है, कि वो बोलते हैं ना कि फल नहीं खाना, बट इन्होंने खाया, अब जाओ झेलो, तो वो वाला बात भी है। तो या इट इज व्हाट इट इज। ही वाजंट सैड, ही बट जस्ट इन डिस्पेयर। यस यस, आप सही कह रहे हो भाई। I feel like I would have loved more details, or maybe I just didn't understand the specifics of what because I think he mentioned people are selfish. या I would have loved to, like, I wish it was longer where he explained what really didn't work other than the relationship itself, obviously. Gentlemen, I'm Did he so say, sad to maybe I inform just you, didn't gentlemen, that I understand. only have Did, around 10 minutes left with you. but like, did he give the details, like, or was it like generic high level? That's what I understood from it. आई थिंक वो डिटेल नहीं दी मक भाई। वो उसने ये Yeah. बताया कि उसको बिट्रेयल का Also, सामना करना पड़ा एंड लाइक हाउ द सैड वर्ल्ड एक्चुअली इज। लाइक ही वाज सो मच इन सैडनेस एंड डिस्पेयर कि he was not discussing the technicalities of that misery, Yeah, right, I in some understood. sense. Okay. ऑल राइट, आई थिंक डीके जी भाई के पास खाली 10 मिनट हैं और हम भी लाइफ को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। स्टिल You इट्स had लाइक a 2 hours। you had a segment, red pill versus black pill. Where is it? या आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसमें if we will continue on that. So Come we on, might that have was to skip or we can interesting. do that on Saturday or Sunday. बट हाँ, ये वाला जो है मेल प्रिविलेज नंबर 9 पॉइंट जो है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया ये कौन सी मेल प्रिविलेज है भाई, ये हमें भी तो बताओ ये कौन सी वाली होती है। Here it is. आई होप अब आवाज आ रही होगी साफ। कितनी चल रही है आपकी ये बताओ। 12.5 इसमें गुजारा चल जाता है? नहीं चलता गुजारा? नहीं होता? नहीं गुजारा नहीं होता। बच्चे भी 2 ही हैं? 2 बच्चे। किराया भरते हो? किराया 2000 रुपये महीने का। वो खाना पीना फिर कैसे होता खाना है? पीना छोड़ के। कोई मदद नहीं करता? नहीं साहब, जो ये लोग कुछ भी नहीं। जो ये लोग अम्बेडकर के नाम पे वोट लेते हैं, ये भी मदद नहीं करते? कुछ भी नहीं। ये भी सब राजनीति वाले लोग हैं ना? राजनीति वाले राजनीति करते हैं। आरक्षण का फायदा भी नहीं मिला आपको?
घर में भी किसी को नहीं मिला सरकारी घर में नौकरी, कुछ भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला हमारे को। आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला जब से कुछ भी देश नहीं आजाद लाभ हुआ मिला। है। ये 70 साल से लाभ ले कौन रहा है? जो ले रहे हैं, हमारे तो मिलता ही नहीं है। कहते कुछ और करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। सही बात है, जो वाकई में जिसको आरक्षण मिलना चाहिए आपको नहीं मिला ना, ये बात आगे तक जाएगी। अब आई थिंक ये ना इस पे ये भी डिस्कशन हम इसको आगे के लिए कर सकते हैं कि आप यहाँ पर भी देखें स्टिल मेन को ओवरऑल इतना डिवीजन में डाला हुआ है ना, वेदर इट इज लाइक द रिलीजन पार्ट ऑफ थिंग्स और अदर अदर थिंग्स एज वेल, कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि एवरेज लाइफ या बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस और मेजरीज, वो सारी की सारी चीजें वो उसको ऊपर ऊपर के लेवल पर ही, सब लेवल पर ही खत्म कर देते हैं। दैट इज काइंड ऑफ सैड। तो ये बात तो है भाई। इसी से रिलेटेड मैं 2-3 और रील्स हैं उसको चलाएंगे और उसके बाद आई थिंक हम एंडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। स्टिल वी हैव 7 मिनट्स। दिस थिंग, I want 20 lakhs ALIMONI or why? Wait, are they even censoring the word now? The YouTube gods? Could be, रिस्क नहीं लेना भाई, रिस्क नहीं लेना वैसा। सही बट है। या विनायक भाई बोल रहे हैं देसी काली गोली जी को रात में किधर जाना है? भाई सोना भी होता है यार, स्लीप साइकिल, समझे? Bro, there's no audio. अरे रुको 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 You Noticam, you see when I talk, the entire stream benefits from it. See, if I were shut up, you guys would be watching a mute video. हाँ, ये कौन बताएगा? एक बार मैंने भेजा भाई। Bro, actually, Rayuga guys, so far the most fearsome character I've ever seen. He was the only red pill male character in anime. ठीक है भाई, I'll take your word for it. Okay, is Maybe my I screen think- on the live? Yeah, I've shared it. I've shared the link. Please check. Okay, here you are. और इस समय मैं कुछ कर सकूं इतना तो चाहती ही हूँ मैं। 1-2 लाख में क्या होने वाला है, दिया हूँ बोल के बोलते हैं। What is her expectation? कितना चाहिए? 20 लाख। 20 लाख। What do you say? वो नहीं कर पाऊंगा सर, जो मैंने दे दिया लोन निकाल करके 2,000 और नहीं कर पाऊंगा। How much she expects? और इस समय मैं कुछ कर सकूं इतना तो चाहती ही हूँ मैं। 1-2 लाख में क्या होने वाला है, दिया हूँ बोल के बोलते हैं। What is her expectation? कितना चाहिए? 20 लाख। 20 लाख। 20 What लाख you- यार भाई साहब। जो मैंने दे दिया 20 लोन निकाल लाख। करके 2,000 और नहीं कर पाऊंगा। Yeah, I think it's. You know, I'm going to say something to you. The word, people think that these are exceptions. The extreme cases of maintenance, extreme cases of alimony. But this is actually baked into the system, right? You will see this video and you're like, अच्छा हुआ the judge ने झाड़ दिया, right? But there are like hundreds of cases where the judges don't say anything. And in most cases, the 20 lakhs is, of course, really clickbaitable. But there's a word which is used in maintenance proceedings. It's called reasonable. Now, Okay. this word is so vague because there is no parameter of what reasonable means. What's reasonable to me is not reasonable to you, it's not reasonable to Bhai, it's not reasonable to the chat. And because it's so ripe for abuse, that's the reason it's abused. The extreme abuse in maintenance cases is not some sort of exception. It is baked into the system. That's the system working as the system is supposed to. So, Kali Goli, you're a liar, right? Kali Goli, can you hear me? Thanks. Hello. I think मिक भाई मैंने एक और शेयर करा। आई थिंक वी कैन आल्सो डिस्कस ऑन दैट। बट या अगर आप सोच के भी देखो, लाइक 12 lakhs इज नॉट अ जोक
20 लाख का तो पैकेज भी होता है बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस में कि माना हुआ पैकेज। इतने में तो फ़ोटो लगा देते हैं वो कॉलेज के सामने बड़ा-बड़ा, लड़के का लग गया 20 लाख का पैकेज ऐसा। एंड दे आर जस्ट कैजुअली थ्रोइंग दीज़ नंबर्स आउट। मतलब केस टू केस भी वो वेरी कर सकता है, बट स्टिल 20 लैक्स इंडिया में 2025 26 के आसपास छोटी अमाउंट तो फॉर श्योर नहीं है। नहीं, ये वाला नहीं था आई थिंक। मैं एक बार Yeah, फिर से yeah. भेज No, I know what you're talking about. आप क्या करती हैं? सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर। यस, क्या चाह रहे हैं आप लोग? अलग होना चाह रहे हैं। अलग होना चाह रहे हैं। आप भी तैयार हैं? जी सर। तो आपके कुछ कंडीशंस हैं? कोई कंडीशन है क्या? सर आई वांट अ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 4 lakhs। हाउ मच? 4 lakhs? Only 4 lakhs. That amount you can pay. Sir, actually, I am in private job, sir. Contact. So what? It's a meager amount. 4 lakh. Though he is in service, but you can pay rupees 4 lakh. सर ऑलरेडी हमारा सर म्यूचुअल में पुट हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये सब किया। Yo, if it's a meager amount, why doesn't the judge pay it? I think Such a it's because she's not asking for like a monthly basis. She's asking a permanent settlement. Now this may Yeah. seem this is actually No. like No, I mean, but like you said, hold on. I'm not there saying is- that's like a happy thing. I'm saying that as the joke of the system is, this is considered good by industry standards. बट यहाँ पर ना असली दिक्कत वो नहीं है। असली दिक्कत है ये भी है कि वहाँ पर एज पर द वीडियो असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है जो महिला obviously, है, that's why एंड she- गाय इज लाइक अ प्राइवेट जॉब वाला no, he's saying the guy is a contractor. मैन। बट स्टिल ये इस पे एक और ये तो देखो, ये तो डिबेट सीधा फिर वर्स्ट के सिनेरियो में जा रही है ना। आप ये भी तो सोचो कि भाई जो तुम कमा रहे हो तो फ्री का पैसा 4 लाख भी, मैं तो बोलता 40,000 भी बड़ी दिक्कत की बात है, बट उस पे कौन Yeah, बात fair. करेगा? I understand that, but I'm saying कि situation इतनी ज्यादा बुरी है, ये अच्छा हाँ, माना यस जाता है। मैं यही कह रहा हूँ, ये अच्छा है। या एग्जैक्टly। हाँ, I think it's I think what you're trying to say, Kali Goli, is that the bar is on the floor, so anything above the floor is an improvement. It's like But what I was trying to say is, again, like you said, what classifies as reasonable? You know, it's the definition is different for everybody. And so what classifies as meager, as the judge says? To me, if a beggar asks for 2 rupees, that's meager. well, Anybody for can him pay. it's meager, no? Because a judge basically gets a huge house. He's a So high court judge. No, so if judge is deciding it's meager, I'm saying like prove it, pay it then. Like I think Yeah, so okay, yeah, it's not a, so yeah. let's look at a generic definition of meager is 2 rupees. Like I bet if I ask you for 2 rupees, you can pay, right? Everybody can pay. How many people in the chat can pay 2 rupees? Would you say 99%? So that's meager. So I think the judge should pay it if it's meager amount. एंड चैट में भी लिख रहे बंदे 4 लाख से डिसअपॉइंटेड। बेटा 4 लाख बहुतों का ना पैकेज होता है, समझे? और कुछ तो 2.5 लाख रुपए पर एनम वाले भी बैठे हैं बेचारे, और कुछ ऐसे भी हैं जो खाली सर्टिफिकेट के ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं 1 साल से। तो I mean, you did not have to छोटा ना take shorts at नहीं me है। like that, bhai. Okay, but Kali Goli, Professor, is this the last video or do we have या more? या Okay, नो, so लेट मी चेक। दिस इज द लास्ट वीडियो। समझदार समझ जाएंगे, ये तो अपना है ही, मतलब आप समझ सकते हैं। बाय द वे गन्ने का जूस जरूर पीते रहें, सर्दियों में नहीं पी सकते तो मत पीना भाई, जो पीना है पियो। या आई थिंक So wait, so I want to ask Kali Goli. So Kali Goli, Yes, you're a sir. lawyer, correct? Yeah. Okay, so you said these cases are not an exception, but what do you think about this idea where they say men can also get the alimony, which is like propagated a lot? Is that true? The idea that men can get alimony is equivalent to the idea that on Jupiter there are Pegasus flying, unicorns in Jupiter. Like, yeah, I guess there might be unicorns on Jupiter, but it's literally never happened before. Like, it's literally never happened on like a general scale. I'm not talking about 1 or 2 exceptions.
right? So the amount of it happening is so low that it's basically impossible. Like, yeah, there might be unicorns on Jupiter. I don't know, I've never been there, but doesn't seem likely. आउटलायर वाला केस है जिसको बहुत, जैसे ये तो वो ऐसा हो गया ना कि 21 साल के अंदर वो फलाने फलाने का लड़का भी तो बन गया था आईएएस, और वो मतलब तो हो बस सकता है, जो है स्ट्रीट लाइट वो में पड़ता एक था। हाइपोथेटिकल दुनिया में हो सकता है, लेकिन असली दुनिया में ना के बराबर होता है. Okay, I want to ask you rapid fire question. Can you answer 5 or 6? Do you have time? It's a one word or a one line answer. Sure. Okay, you're a black pill. You are black pill because why? One word or one sentence? Samaj. Vague. Okay. I mean, one answer. That's my answer. Okay, now this is a different. You're a black pilled YouTuber because why? Huh. Black pill YouTuber because YouTube AdSense. बोल दो भाई, बोल दो. यहाँ तो नहीं मिलने वाले भाई, कैसे? स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती ऐसा. जरूर. Because I'm bored. Okay. Okay, Professor. By the way, can you pin his channel in the chat for? I think we're about to end, so at least people know where to follow him. He has not updated. So, by the way, next time you go on podcast with Professor or me, please put your YouTube tag here so people know where to go. Can I answer like just one thing? Mohit Ranjan has asked, should we date an office colleague or not? My answer is never ever do that. Just never do that. And if you want to know why you don't want to do that, see section 169 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Thank you, gentlemen. I will be taking my leave. No, I have 4 more questions. I was not done with my segment. Bro. Right. Okay, Professor, you answer it. 6 questions. Yeah, go ahead. Okay, so we'll restart. Okay. First of all, what's your ideology? I don't even understand. Are you a men's rights activist, MAGTOW? Like, where are you at? Manosphere? Batman. Okay, you're a Batman activist because why? Friend. Late friend. Okay, that's you give me too short of an answer. Okay, you're a YouTuber because why? Late friend, I would say. Yeah, the answer would be the same. When I finish the segment, please tell us what you mean by that. One reason why feminist women are welcome to your channel is they aren't. No, वो मेरे पास buzzer नहीं है. No, but you have to answer one word or one sentence. Okay, repeat the question again. One reason, single reason why feminist women are welcome to your channel is what? Discourse. The only reason you would accept them as the audience. Discourse. Of what? एक वर्ड से ज्यादा हो गया मिक भाई, ये चीटिंग है ये. No, I said one word or one sentence. I mean, you have to give an answer. It's a non-answer. Discourse is a non-answer. Okay. Specific. So that truth comes to light in front of majority of the people, not just to the audience. कि जिसको डीमनाइज करा जा रहा है असल में वो क्या वो डीमन है भी, या जिसको एंजल ऑफ लाइट समझा जा रहा है वो क्या वो तो डीमन नहीं है उसके लिए. Okay. Something feminists are right about. मुश्किल क्वेश्चन दे दिया ये तो, रुको सोचने दो. One thing. Let me think. Climate change maybe.
That's not a feminist issue. है नहीं, ऐसा ऐसा कह नहीं सकते, बट या बट बहुत मुश्किल है भाई, कोई है ही Okay. नहीं तो मैं कैसे बोलूं? Okay. Something feminists are wrong about. ये तो बहुत इजी है, डीमोनाइजिंग मैस्कुलिनिटी, सिंपल। Okay. So you said instead of Batman, don't you think you are more of a red pill guy? Like bat pill, are you talking about bat No, pill I or asked you like, what are you? Men's rights activist, MGTOW. What's your okay? ideology? You said Batman. So I'm saying like, aren't you more like a red pill instead? Like, isn't that more accurate? It would be hard for me to answer because, but yeah, मेरे end से it is more about the descriptive reality, how I consider it, because people find red pill as a open source word जो वो हर चीज के लिए use कर देते हैं. Okay, so So you don't want to be in a box. no, Okay, no, so not like that, not like that. Okay, let me explain it. Hmm. रेड पिल इन जनरल लोगों को लगता है एंड्रू टेट रेड पिल, पैसे कमाओ लड़की पड़ जाएंगी, वो इट्स नॉट समथिंग रेड पिल इज ऑल अबाउट. आई एम अ रियलिज्म, यथार्थवाद काइंड ऑफ अ पर्सन. लाइक मेरा सोचने का नजरिया वहां से जाता है जो डिस्क्रिप्शन से चलता है रेदर देन प्रिस्क्रिप्शन के, और उसको एक्सप्लेन करना फॉर मी इन जस्ट अ वन वर्ड वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी हम लाल गोली वाले, नीली गोली इज वे टू mimetic form of language to be used. okay, your favorite manosphere influencer. Indian or overall? Okay, tell us both. One Indian, Okay. one, I guess, international. It would be Aaron Cleary, internationally. एंड इंडिया में तो आई थिंक अभी बहुत ही कम लोग हैं, बट जितने भी हैं, ऐसा मैं रैंकिंग नहीं देना चाहता, बट आई थिंक किरण भाई हैं और गोल्ड क्लैड इज ऑल्सो देयर, यू आर देयर. सो लिमिटेड ही नाम है, तो मैं मतलब आई कैन नॉट इवन से कि मैं 10 नाम है तो उनमें से कोई एक बताऊं, सभी, Okay, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग. या last two questions. So one thing that red pill is right about is what? Okay. One thing red pill is right about female nature with respect to ego psych. Okay, and one thing that or no, let's switch that. Let's instead of red pill, tell us one thing that MGTOW are right about. Is that the answer the same? Female nature? Yeah, Or yeah. does that change? Okay. Okay, then, Okay, yeah. Mhm. okay. One thing. Okay, tell me one for each. Something Mhm. that red pill and MGTOW are wrong about. One thing each. Okay. रेड पिल, व्हेन आई एम यूजिंग कि रेड पिल रॉन्ग है, मतलब मैं उसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, नॉट इन द इंडियन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट. मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली जो रेड पिल नॉर्म बेचा गया ना कि पैसे कमा लो एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन, या व्हाट कलर इज योर बुगाटी वाला, दैट इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन. बिकॉज बुगाटी कमा भी ली तो इंडिया में तो लागू होने नहीं वाला, तो वो वाला रेड पिल वाला पार्ट इट्स रॉन्ग. विद रिस्पेक्ट टू मिगटाओ, आई वुड से being blackpilled by following MGTOW is wrong in MGTOW. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे है. MGTOW is not wrong in general, but if you are getting blackpilled by that, वो एक something जो मुझे लगता है वो गलत हो जाता है, and the same also applies for. So Professor, you dodged a question on Discord once. I asked you this, and you made helicopter noises, and you left. Okay. Okay, so let's settle that today. Okay. Are you interested in getting married or not? Okay. My answer would be the same. आपको कैसे पता हुई है नहीं हुई है? Oh, It would be. okay. That's interesting. So are we gonna find out or not? Like, is there a secret? वक्त बताएगा. The closest answer I can give right now. So, okay, so that's your secret. Okay.
MGTOW is wrong because MGTOW are not searching solution or fighting; they're avoiding. Um, is that true? I don't agree with that. I think MGTOW are finding solution. I guess. सी Okay, I guess. द थिंग इज मैं यूट्यूब वाले भाई का एग्जाम मतलब आंसर देना चाहूंगा. Uh-huh. I don't think like saying MGTOW is wrong is the right like sentence to be or comment to be made. The thing is MGTOW can go wrong or not go wrong. That is the question that you need to ask. क्योंकि वो सारा डिसरप्शन पे और ऑल्टरनेटिव्स पे रहता है. ये बिल्कुल किसी मूवमेंट की तरह है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप उसे कैसे चला पाओगे ना. समथिंग लाइक दैट. क्योंकि हम ना रॉन्ग और यस और नो में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. But there are other things too in the background. I don't know if it can be generalized. I think some MGTOW might be of the opinion that it's easier to just isolate yourself and live an easy life, and I think that's all right. But not every MGTOW thinks like that. Some of them हाँ. might be avoiding the society so their life is easier, but they might also be trying to change it. So like I don't think it's a blanket statement is probably wrong. All right, Professor. So are you gonna tell us the friend that turned you into a Batman? Is that a story? Yeah, so I've also discussed it earlier as well, but मैं short में बताना चाहूँगा. Otherwise वो फिर थोड़ा और वैसा हो जाएगा. There was one of my friend, he's no more, and the reason why he is no more is a bit connected to uh, the not directly gynocentrism, but yeah, in a way you can say. And at that point of time, a lot of my blue pill Disneyland La La Land mindset uh, principles got broken down, and a reality shift aya. I got to know a lot of those things, and because of that, I started this channel also. दो ऐसा नहीं था कि ये इवेंट कुछ साल पहले हुई थी बिफोर आई स्टार्टेड द चैनल. उससे पहले बहुत मतलब साल हो गए थे उसको. बट कहीं ना कहीं ये था कि देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, ऐसा कि वो बजे जा रहा है बार बार, एंड आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज एंड एवरीथिंग. सो देन वो टाइम आया कि नहीं भाई अब तो इस पर बात करनी पड़ेगी, अब आई कैन नॉट फेस दिस मोर. And then I started being vocal on the internet. I never thought this would even go till 1,000 subs, and now it is around 10K, and like even more than that we have a good amount of. मैं तो good ही मानता हूँ because even in Indian context it is a big number to achieve. But yeah, था, और वो मतलब उसको 10-15 साल हो गए हैं. 10-15 साल के पूरे टाइम में I was reading, I was going through my life, and there were all those things. But कहीं ना कहीं बीच में था वो चीज़. So what was do you remember what was the last straw where everything resurfaced and you were like, no, I have to do something, because you were going 15 years, Yeah, right? yeah, And yeah. you probably moved on, focusing on Mhm. something else. So where was that turn in the life that, hey, no, I cannot ignore this anymore. I have to attend this issue. I have to open up a channel, create a space, and do all of this work. Why? What was that one thing that triggered you? Uh, it would be hard to recollect memories from the past like for just one single event, but yeah, it was a series of event. I've already told this in my like previous videos as well, that some people they get red pill like just by one big drastic event in their life, and then they straight away go to the flashpoint era. And then for some it could be a series of it. For me it was a series. Like I got to see life in the projects or hikokomori uh, being practiced, and the life of an average guy, the preparation ones as well, and like multiple other events as well in my very own personal life. Like I won't be able to give you an exact uh, thing on that. It's like a cumulative bouquet of good and bad experiences that at least give me some sort of clarity about where I was going. Okay. So if you were not married, would you then marry? I changed the question, by the way.
So we're चालाकी देख रहे हो? so we're assuming that you are single, hypothetically. So Okay. would you marry then if you were single? No. No. Okay. Until Can you unless Marco disruption now? would be there. Mm-hmm. Okay. Yeah, I was thinking not take you deeper today. Yeah, Professor is in his peak, although many more started exposing society decades earlier, but social media was not there. Yeah, I agree. I was there for that. I think Professor was probably there for that too. Yeah, see, like even you might think that Red Pill is very new on YouTube, but there were other guys as well. Like before I was there, like in 2019, 2020, there were some people, but they had a number of like 600, 500 or 1K subs. And I'm not somebody who is very much infatuated with this idea of how many subs you have. बट द थिंग इज उन्होंने चैनल बहुत जल्दी बंद कर दिया या वो कंटेंट उन्होंने नहीं बनाया मे बी दे मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ और व्हाटएवर वुड बी द रीजन बट हाँ फेसबुक ग्रुप्स पे भी देयर वर सम मेंस राइट एक्टिविस्ट्स एंड हु आर लाइक टॉकिंग अबाउट दिस like I still remember author Jyoti back in 2015 2016 if I'm not wrong. So yeah, there were people who were already talking about this thing. It's not something new, but yeah, the way अब वो Gen Z कह लो या फिर memes के through या इवन रेड पिल या जो लिंगो है ना पूरा अब मेमेटिक एनालिसिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है स्पेक्ट्रम हो गया ब्लैक पिल ब्लू पिल वो थोड़ा कंपैरेटिवली आप कह सकते हो नया नई चीज है ऐसा Mick, by why don't you debate and expose feminists in live debate like men did in the West to expose their nature? I actually love debates. I think debate, I've never gotten to do it on YouTube, but that's where I shine the most. At least people who know me from Clubhouse probably remember that. However, the problem is, how do you get debates on YouTube? That is the issue. If you can find somebody to debate, because I don't know how much you guys know, like I've reached out to some of the critics, that Shalbatkar guy, even Woke Bros, I proposed a debate to him. He didn't accept it. I even reached out to Raghu. He didn't accept it. And so I reached out to small and big creators, but they're just not really entertaining it. So yeah, I think that's a challenge. I think what happens in audio spaces, I think one thing that we can try for debate, I don't know if it'll work or not, is that you can go on Omegle and then try to come across random people and then ask them their opinion on, maybe some inviting questions like, hey, who has more rights, men or women? Are you a simp or, a feminist and things like that, and see what answers come out of there. So I tried that offline last week, and it turned out it took me I had to skip 20, 50 people. Like, people don't really stay to talk to you. And then 20, 50 skips, I don't remember the exact number. One guy stayed and I had a good conversation. So I was thinking about is it really a good idea to do it on stream? Like, would people really find it interesting? They're having to wait through 20, 50 skips to get to the guy who will talk to me. But yeah, I think if we find somebody to debate, whichever way it happens, I think it'll be really interesting content. And if you guys are interested, I think you should go in, because a lot of times you send us reaction content of small creators. Like, there's this guy called Psychologist Reacts. I think his channel name is Kabir, and they've sent a few feminist creators to me as well, like Ragini and some different people. And if they trigger you, I think you should ask them to do a debate with us, because they don't respond to our emails. But if you go spam it in the chat, maybe they'll take it up, And one more important thing is, see, debates का जो culture है ना, अगर आप उसे वेस्ट वाला देखेंगे तो वो प्रिटी सॉर्टेड है और वहाँ पर बहुत सालों से डिबेट्स हो रही हैं। आज तो आप उसको मेन वुमेन रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में देखते हैं, बट वो पहले होती थी एथीस्ट और थीस्ट या कंपैरेटिव रिलीजन की डिबेट्स, और लाइक दे वर नॉट इवन डिबेट्स, दे वर लाइक क्रूसिबल्स
जिनको नहीं पता क्रूसिबल में बता दूं, क्रूसिबल का मतलब होता है कि यू आर डिबेटिंग टू द पॉइंट जब बंदे सामने वाले की आंखों में से आंसू आ जाएं, उस लेवल का डिबेट। तो वो बहुत 90s के 80s में भी चल रहा है। अगर आप वहां के जाके देखेंगे, अपोलोजेटिक्स होते हैं, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स, दे हैव बीन डूइंग दीस काइंड ऑफ डिबेट्स विद एथियस्ट्स और एग्नोस्टिक्स एंड वाइस वर्सा। बट इंडिया में डिबेट का कल्चर ना, इट्स ओनली लिमिटेड टू 9 बजे वाली न्यूज़ जिसमें एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं लोग। तो वो Yeah, but पॉजिटिव वैसा नहीं है। your ये भी एक professor पार्ट। in India, they don't even do debates for prime minister kind of elections. Like Yeah. for every election, they have debates. For mayor elections, they do. For governor, they do. For presidents, they have multiple debates. You know, they have a primary series of debates, and then the main election goes, and they have debates. And the entire idea is to make these people compete on a stage, and so people get to know. You know, like they get tested in the competition, right? So they find out who's not. So I think they Yeah, don't yeah. do it, but anyway, I think it's also about their channel size issue. Like sometimes you can find feminist creators who are clout hungry. If they have views and followers to gain, they'll come. But when the our channel is small, like there is no big clout gain from it, right? So yeah. Yeah. I mean, Because the thing is, जो intent है ना मिक भाई, वो थोड़ा अलग है। Here the intent might be discourse, there the intent might be views मिल जाए बस। yeah, I'm gonna be honest. If I don't want to be arrogant, but I think if I debated a feminist, it's more likely that I will attract their audience towards me, especially the male feminist. So I'm assuming a lot of the male feminists, like Kabir, for example, have guys listening to him. If I went to that guy, what's that conservative guy? His name is Arvind something. You once sent me his video, remember? He had a pack graphic. I'm not able to recall right now. Chat बता Yeah, यार। so I think what's gonna happen is if I ever went to these podcasts, if they have audience of men, they're likely to lose the debate, and I might make more sense to their audience. So I might profit and they might not. There's a high likelihood of that. And I think they are intelligent enough to gauge that thing in advance, and so they don't even try. Yeah, चलो हटाओ ऐसा। Could be. But yeah, मैं तो चाहता हूँ यार इस तरीके का डिस्कोर्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर कोई ऊटपटांग भी बोल रहा है तो वो फिर डिबेट में आके कर लेना, डिबेट डिस्कोर्स कर लेना तमीज से। ये क्या होता है कि आप हर चीज को कैंसिल कर दो कि जी इन्होंने बोल दिया कैंसिल कर दो, इसने बोल दिया कैंसिल कर दो। और अगर आपने देखा, हम अपने जब भी बात करते हैं, लाइक वेदर इट वाज समय रैना वाला पार्ट और वेदर इट वाज दिस साइकोलॉजिस्ट वाली चीज, द प्रॉब्लम हियर इज द डबल स्टैंडर्ड्स, नॉट कि कैंसिल इनको कर दो कि ये कुछ बोल गए, ऐसा बोल दिया। बोला तो उस पर बात करो ना कि चलो आओ इस पर डिबेट करें। बट वो बहुत ही इनकैप्सुलेटेड स्पेस में हो रहा है, एंड आई होप कि मे बी फ्यूचर के अंदर वो चेंज हो चीज़ें। क्योंकि जब चेंज होती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है अमिक भाई, द बिग रीजन व्हाई, अब वो बाद में लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आया, क्यों आया, एक्स वाई जी। बट जिस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे ना, उस टाइम पे ये जो डिबेट वाला कंटेंट है, इट वाज ऑन पीक। और कहीं ना कहीं बड़े चंक में लड़कों को वो सच्चाई नजर आएगी जब ये इनसे डिबेट करते हैं, तो सच ऐसे निकलता है बाहर। तो उसमें मेजोरिटी वाले जो वोटर्स हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक्सट्रीम राइट वाले, ऑल्ट राइट वाले, वो वहां पर भी गए। तो या आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिबेट्स होनी चाहिए इस तरीके से। ऑल राइट मैक भाई, एनी फाइनल कमेंट्स भाइयों के लिए इंटरनेशनल मेंस डे पे? अब तो खत्म भी हो गया मेंस डे आई थिंक, बट या नवंबर मेंस मेंटल हेल्थ मंथ होता है, तो ये भी बात अपने हमें बतानी है। एंड इंडिया इज नॉट रेडी फॉर डिबेट्स एज इट इज शाउटिंग फेस्ट ओनली। या उसमें ना लड़ने लग जाते हैं यार। मैंने तो एक न्यूज़ पे वीडियो देखी थी, उस पे चप्पल उतार के एक दूसरे के मार रहे हैं। भाई क्या डिबेट ही तो कर रहे हो, कौन सा एक दूसरे से तुम इतनी लड़ जाते हो? यहाँ पर वो इंस्टाग्राम पर भी वो कल्चर है, वो बंदे मतलब आप अगर किसी से डिसएग्री भी कर रहे हैं ना, तो उस पे बंदा बोल रहा है मैं अपने बंदे लेके आ रहा हूँ, तो अपने बंदे लेके आ जा। भाई क्या कर रहे हो यार बच्चों की तरह? या तो तुम्हारे पॉइंट्स में बात नहीं है, तुम्हारे पास इनसाइट्स नहीं है, दम नहीं तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स है उनमें, लॉजिक है जो उनमें। ये क्या होता है कि जी या तो वो बंदे बुला के ला रहा हूँ, वो तो गलत है ना भाई। और मतलब बुला के ला रहे हो तो इसका मतलब भाई फिर आपके लॉजिक में नहीं है वो, मतलब वही वाली बात है। Masculinity Rocks, brother, do you know that Ruga is better than Andrew Tate?
a real example of stoicism. He was 0% simp and 120% stoic. He's a true Mukhda. Bro, देखना I'm gonna पड़ेगा ये। watch it after the stream. Yeah. Yeah, but I think Andrew Tate is a very low bar anyway, so I think a lot of एंड्रू people टेट इज जस्ट लाइक मिक भाई, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि बार इतनी लो है कि थोड़ा सा भी कोई ऊपर उठता है तो लोग Yeah. समझ जाते हैं वैसा। All Love right. you and Professor both are doing a lot of more intellectual. Yo, Professor, I feel like you know we should do a podcast with you in focus and make you answer a lot more hard questions. And for that, Me you and should who? my Me and channel. who? Just you. Not you and who, Okay. no other Okay. stories, Okay. no Okay. random topics, no हम्म। reaction content, just you and tough questions. हाँ, go ahead. Yes. करते हैं भाई, करते हैं। By the way, चैट बड़ी नाराज थी, आप लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो तो करो यार, मतलब लाइव स्ट्रीम और वीडियोस आती है तो अच्छा Yeah. लगता है। So, if people are wondering, I'm working on a video. It's 50% done. Let's just assume maybe 2-3 weeks more. So they're very production heavy, right? Like there's a lot of editing, a lot of visualizations, animations involved. I think AI is making it a bit easier now. But I don't think I can do both. I think I have to focus on videos instead. So chat, let's do this. Okay. If anybody's still upset with me, let's release this next video first. And then I'll do a live stream. And look at the quality of that video, the content that drops. And let me know if you want me to do that more. Because it has more chances of entertainment and growth. Or you want me to do live streams. Okay. So we'll discuss it when you have the comparison. I commented Mick on your post today. Okay, Tahil, I will check and respond to you. एक कमेंट लेना पड़ेगा। Mukhda Dada liberated me first with his intellectual content. Now Professor is the guy who feels. Yeah, so I think Mukhda Dada also joined one of my gaming live streams on Professor's Batcave channel. वहाँ पर वो थे, and see the thing is, in this space it is a bit of like I won't say thankless job, but yeah, it's कई बार वो हो जाता है वैसा, because even if you're telling guys about the reality or truth, कुछ sims आते हैं और male feminist आते हैं, and then they cry about in the comments. And sometimes it also happens कि like sponsor वाला पूरा part भी रहता है, like वो जो support है। You should, if feminists come to your chat, you should do what Asmund Gold does. Take their chat and make them debate with you in text. You know what he does? He's like, if Zach gets a, toxic comment, he pulls it up on the screen, and then he asks them questions, and he asks them to answer it. Critical questions. So I think you should try that. Jessa is saying at least do one monthly live. Saturday. Okay, Saturday has the same question. Okay, guys, let's wait. Okay, I don't think I can do this on Professor's stream, but after I release video, we'll do a live stream and I will explain to you analytically pros and cons of doing a live stream. Okay, I'll give you the data, and based on that, all of you can vote in a poll what you want me to do. Okay, because the evidence that I have seen, I see live streams as a total waste of time. I know people enjoy it, I enjoy it, but end of the line is that YouTube does not promote it. Channel will not grow. My channel has been stagnated for, I don't know, 7-8 months. It's been stuck at 900, right? So I will give you the data. Okay, you look at it yourself, and then you let me know if you want me to spend time in it. And if you vote yes, we'll do it. Okay. But I can only do one thing. There's only so much bandwidth. Yeah. But I know you guys enjoy it. I think the other thing I could do is maybe hire a thumbnail creator, pay him, I don't know, $200-$400, whatever it costs me. As long as he creates thumbnails, I think I can do like one live stream a month where I just run around on Omegle and Discord server looking for people to debate and trigger them here and there. I think that's good content. And other thing I can do is a reaction content on people like Raghu and keep roasting them.
but I think somebody would have to create a thumbnail. Thumbnail eats like a lot of time, and then Yeah. you become useless. Nick bro, 1 chat like 2 में months. See, negotiation has gotten more reasonable now. yeah. Okay, I Nick, one think more problem is your content is in English. That's also a problem in India for audience. You are right. I was researching as well. I think something like 5 to 10% of men consume English, not consume, but like speak English properly or even watch that content. So it is a problem, but I don't ऑडियो know ट्रैक का how यूज to. करो ना, ऑडियो ट्रैक भी आई थिंक आ चुका है वो इंग्लिश और हिंदी के लिए. This that Yeah, might but not that be only, that much refined, but yeah. but that then again, that only works on videos. It doesn't work on live streams. All right. Okay. I think हम लाइफ को एंडिंग की तरफ ले जा सकते हैं. हाँ, एक और चीज़ थी चैट, अगर आप थंबनेल डिज़ाइनर हैं या फिर आप वीडियो एडिटर हैं, स्पेशली इफ़ यू नो हाउ टू क्लिप लाइव स्ट्रीम्स एंड मेक गुड वीडियोज़ आउट ऑफ दैट, प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं आप मैस्कुलिनिटी रॉक्स पाई से भी या मेरे से भी. इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ. व्हाट इज़ द इंस्टाग्राम हैंडल? Because we want to make this scene grow, and there are other creators as well. So please support us in this thing. Yeah, but please only reach out to us if you really know editing. Yes. I've Or hired the a best few. thing would I've be, hired guys. It was a nightmare. They were like, it's like they're always noobs. They don't really know much, and they end up making things worse because I have to teach them every little thing. yeah. So see, you can share your what do they call, like portfolio or maybe work of the past which you have done. So that will help. All right. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. This is the QR code that you can scan and support this live, and also for one-on-one calls, one-on-one coaching calls. आप इसको स्कैन कर सकते हैं. बाय माय कॉफी लिंक पर आप चले जाएंगे. वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो भाई लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. टिपिकल थिंग्स जो हर यूट्यूबर बोलता है. हाइप बटन ज़रूर दबा दीजिएगा. हाइप बटन से वीडियो हाइप होती है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है. बिफोर वी close the stream, Mick, by any final comments for our audience for Wednesday? Anything? I mean, man, the only thing I can say is, if you're having a good time, enjoy. You deserve it. If you're having a hard time, just remember that a man who loves the journey can travel longer than the man who loves the destination. So just ride it, and it's not always bad. Okay, and so every guy is appreciated. Every guy matters. Yes. And yeah, just to remind people, the dudes around you, played a good role, whether as a friend, father, brother, son, anything, right? Just let them know they matter, and I think that's probably the best thing I can say. Exactly. Before I मैं भी थोड़ा एक final comment देना चाहूँगा कि to all the guys out there, don't attach your identity with anything that is materialistic or that could be snatched away, या जिस पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं है. हमेशा इस बात को याद रखना that who you are as a person या उस चीज़ को जो डिफाइन करता है वो किसी टैग से नहीं आना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए. तो इसलिए खुद को वैल्यू भी करो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन. एंड इफ somebody is not there to appreciate that, let them just be. ठीक है भाई, तुम जिसको जो जीना है वो जिए, बट अपने बारे में भी भाई सोचो. इसी एक मैसेज के साथ हम भाई आगे बढ़ते हैं. और बंदे बोल रहे सिंप गुल्ले चलाओ, वो तो हमारा टाइटल ट्रैक हो चुका है, उसको भी चलाते हैं. एंड ये थी आज की लाइव.
सिम गुल्ले चलाने से पहले हमारा एक नया टाइटल ट्रैक भी आया है, इसको भी हम चलाएंगे। उसके बाद सिंपल गुल्ले। कुछ भाई कह रहे थे भाई इस गाने जितने भी हैं इनको कहीं पे पोस्ट करो, तो प्रोफेसर टॉक्स पे मोस्ट लाइकली बाय नेक्स्ट वीक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। वहां पर आप इसको एज अ टाइटल ट्रैक भी सुन सकते हैं, और स्पॉटिफाई पे भी यू कैन ऐड दिस, और मे बी यूट्यूब म्यूजिक पे। तो मे बी आप जिम वगैरह में हैं या कहीं पर आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप सुनना चाहते हो तो आप सुन पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिक भाई एंड DKG भाई, एंड आज के हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने लाइव को स्पॉन्सर करा, इंक्यूजिटिव भाई, टेक्नो भाई, फॉर द सपोर्ट। थैंक यू ऑल। Yeah, I came from the streets where the truth ain't sweet, where a simp get played and the strong don't weep. Taught to hustle hard, never beg for a seat. While they chase validation, I just grind and eat. Was Professor on the screen, dropping jewels every night. Teaching young kings how to walk in the light. No cap, just facts, we ain't bound to hype. While they worship the flesh, we resurrecting the fight. I ain't bitter, I'm better, let the beta boy shiver. She left you on red, good deliver the river. Masculine frame like I'm carved out of stone. Ice cube with the truth, yeah I ride alone. Red pill scriptures, bars from the throne. Masculine warriors, stand on your own. She ain't your queen if her past unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Brofessor said it best, unplug, awaken. No love for a heart, that's faking or taking. Off in the mind, sigma in my soul. It's that man still rap, reclaiming control. I ain't playing with these games, they running. Tears for a queen, nah dog, I ain't dumbing. She want the bag, the status, the man with the clout, but was ghosting good brothers who were trying to look out. Barking at the lies, fight through the fake. DMX style, I never pump brakes. All that you go, girl, turn kings into clowns. But we rising from the dust, taking back our crowns. Respect the grind, don't chase the skirt. You bleed for your fam, you sweat through the hurt. Shout to Brofessor, drop bombs with precision. Teaching lost boys how to make that decision. There's scriptures, bars from the throne. Mass winning warriors, stand on your own. She ain't your queen if her past unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Professor said it best, unplug, awaken. No love for a heart, that's faking or taking. Off in the mind, sigma in my soul. It's that man still rap, reclaiming control. Yeah, dear brother, don't fold, be the man they fear. Truth cuts deep like a blade of the ear. I seen love turn kings into shells. While she danced in the club, he was rotting in hell. Mama taught me strength, but the streets talk game. And the lies from her lips, they said hearts aflame. Don't worship the flesh, seek purpose and pain. Let your scars be the ink, let your hustle explain. I see the trap, bruh, the modern woman parade. Selling dreams with a filter and designer shades. But truth lives on in the voice of a rebel. And Professor keep it G, turn it down to 11. Red pill scriptures, bars from the throne. Masculine warriors, stand on your own. She ain't your queen if her past unknown. Respect ain't given, it's built, it's grown. Professor said it best, unplug, awaken. No love for heart, that's faking or taking. Off in the mind, sigma in my soul. It's that battlefield rap. अरे सुन रे सोसाइटी दे के सिंपल गुल्ले, अब आया प्रोफेसर सिस्टम को फुले। बेटा गेम खत्म, अब चलू है क्लास। प्रोफेसर आया फुल रेड पिल का ब्लास्ट। ना क्राउन चाहिए ना कोई क्वीन, अपने जोन में अल्फा भाई चले क्लीन। रात का राज दिन का प्लान, ब्रो बन गया छड़ और तू अब बन प्लान। तेरे जैसे लोगों पे करूं मैं रोस्ट, स्वैग में अग्नि हर लाइन में गोस्ट। सिंप लोग बोले लड़की के लिए जी रहा हूँ, भाई बोला तू जी नहीं रहा तू बस पी रहा हूँ। She said I want a man who listens and cooks, मैं बोला मैं माइक तोड़ तू अपने नेटफ्लिक्स देख। लुक तेरे जैसी फेमिनिस्टा रील्स में फुल ड्रामा, पर खुद को करती फिक्स सालों से विद हर मामा।
रेस की हुई बोलती है where all the men प्रोफेसर हंसा building empires again and again तू चेस करे छोड़ी मैं चेस करूं ग्राइंड तेरे प्यार के झांसे में अब कोई भाई ना ब्लाइंड जिसने किया सेल्फ पे काम वही बन गया लेजेंड बाकी सब सिम्स बन गए छोटी रील ट्रेंड मर्द का जीवन ना कोई रिग्रेट प्रोफेसर बोले मेरे नाम पे करे माइंडसेट सेट उसकी एक्स ने बोला I miss you so bad भाई बोला I miss my peace more too bad बहन की विश लिस्ट हाइट का और ट्रिप बाली मैं बोला पहले लर्न कर तू रोटी बनाना गाली बिरयानी चाहे BMW राइड पर खुद जॉबलेस और एटीट्यूड हाई टाइड हरियाणा के गांव से छड़ बनना था गोल आज प्रोफेसर के नाम पे बज रहा कंसोल कुंदी मत खड़काओ लेक्चर चालू है जो भटक रहे थे उनका ज्ञान मालूम है प्रोफेसर की क्लास रेड पिल का राग सुनो बेटा सिंपो ये असली मर्दों का जाग नो सिंप नो स्लेव नो बेटा क्राई बस चढ़ बन राइस कर स्काई हाई ओए प्यारे भाइयों लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है सब्सक्राइब His name is John C. Oh shit, here we go again. Dom the Monko.